दोस्तों हबीबी भाईजान, दोस्तों मतलब अभी तो आप लोगों को पता ही है मेन न्यूज क्या ही होने वाली है। अंशुमन भाई आए हैं आज टीसीएस में डेब्यू कर रहे हैं और अ वेरी क्या कहते हैं ऑस्पिशियस डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैप्पी डे भाई। फीलिंग अल हबीबी भाईजान, हबीबी और हमारे साथ ऑब्वियसली वेटरन ऑलवेज भाई साहब। मैं भी रेड पहन लिया हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट। काइंड ऑफ गॉट द न्यूज़ ऑफ हबीबी, बट यार मैं तो हबीबी मैंने ड्रेस पहन के आया हूँ, मुझे ड्रेस ये पहन के रुमाल यहाँ पे डालकर वो रोप लगा लेना है बस। वल्लाह मेरा एक्चुअली लास्ट समर लिटरली डेजा वो लग रहा है मुझे, क्योंकि लास्ट समर सेम चीज चेल्सी का हो रहा था, मुझे याद है। और हम वो बेसिकली वही हबीबी अभी कर रहे थे। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का टर्न है, अब देखते हैं हाउ इट गोज, लेकिन लुक्स लाइक पॉजिटिव ना फॉर श्योर। इट्स डन। अब यही है कि अब वो अनाउंसमेंट कब होएगी, अभी ये हफ्ते में तो नहीं है। टुमारो इट्स द लास्ट डे, और कल फ्राइडे को कतार में काम होता नहीं, सैटरडे संडे यूएस यूके में काम होता नहीं। तो अंशुमन भैया दिस इज योर स्टेज, आपका पूरा बताओ। क्या मैंने देखा आप सुबह भी स्ट्रीम कर रहे थे, पूरी बातचीत उसके बारे में चल रही थी, प्लीज एनलाइटन अस, क्योंकि मैं तो बस जस्ट अभी ऑफिस से आया हूँ और सीधे बैठा हूँ, मैंने लिटरली नहीं पढ़ा। तो प्लीज शुरू हो जाएंगे इसके बारे में, क्या क्या हुआ है पूरी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शेख जासिम की जो कंपनी थी, ठीक है, 92 फाउंडेशन, दे आर ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन यूके नाउ, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि उसको रजिस्टर कर दिया है, मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्सक्लूसिविटी नहीं है विद शेख जासिम। मतलब ये है कि अगर सामने से सर जिम रैटक्लिफ अप्स हिज बिड, तो यहाँ पे ये होगा कि शायद एक और बिडिंग प्रोसेस चालू हो जाए, यू नो। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम न्यूज जो भी सोर्सेस से आ रहे हैं, the money that Sheikh Jassim is paying has totally blown out Sir Jim Ratcliffe out of proportion, ठीक है, क्योंकि ग्लेजर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर से भी। सो दे आर लाइक कि भाई अब हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो, यू नो, मतलब हमारे पैसे हैं, हमें अगर तुम इसको बेच दोगे शेख को तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, अदरवाइज चलो भाई कोर्ट में चलो। कोर्ट में ज्यादा कुछ होता नहीं, बट वो प्रोसेस जो है वो और डिलेड हो जाता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। ये 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था इन अ वे कि अभी तक हमारा ट्रांसफर विंडो शुरू हो चुका है, they would have started as well, but unfortunately वो अभी नहीं हुआ है। So but हाँ, it's just a matter of time। अंशुमन, if I'm not wrong, सर जिम रैटक्लिफ का जो है बेसिकली as per the new rules of Premier League, if he is not मतलब taking a loan at any point, only then वो पॉसिबल है, राइट? ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। फ्यूचर ये ऑलरेडी नेगोशिएशन में है फॉर फ्यूचर परचेजेस। ओके, दोस्तों सूरज भाई विल टेक ओवर, क्योंकि सूरज भाई क्या और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में वो आए, टॉटनहम की जर्सी पहन के बातचीत उसके बारे में होगी। पर तब तक के लिए अल हबीबी भाई इन द चैट भाई, अल हबीबी होना चाहिए, क्योंकि भाई जो भी चाहते थे अब भाई जल्दी से रियल मैड्रिड एम्बापे ले लो, इससे पहले थोड़ी सी देर हो जाए और ये लौंडे आ जाए मार्केट में। भाई सूरज भाई हम आ चुके हैं अब वो रियलिस्टिक यार एक्चुअली अंशुमन, क्योंकि राशफोर्ड और एम्बापे एक्चुअली देखा जाए तो मतलब देयर इज अ कनेक्शन, और प्लस कहीं ना कहीं मुझे लगता है द वे दैट एम्बापे एंड राशफोर्ड प्ले ना, वो ज्यादा सूटेबल है कंपेयर टू विनीसियस जूनियर एम्बापे, क्योंकि वो एक्सचेंज स्वैप कर सकते हैं पोजीशंस एंड ऑल दैट। तो अगर पैसा का मामला है देन फाइन, बट अदरवाइज वही है यार, ड्रीम क्लब का अलग चीज है। सॉरी टू इंटरप्ट, व्हेन यू हैव टू क्लब्स वो आर बेसिकली, आप बोल रहे कि एक तरीके से सिस्टर क्लब्स हो जाएंगी इन फ्यूचर, ठीक है। कतार वी ऑल नो है तो एक फैमिली ही ना, ठीक है, भले ही ऑर्गेनाइजेशन वाइज कोई और ले रहा हो, यू नो, इसको QIG ले ले, उसको यू नो कोई भी ले ले, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बोलोगे तो ये ना कि दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द फैमिली। रियलिस्टिकली इसी वजह से एक ही चीज बोलूंगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट एक्सपेक्ट अस टू हैव अ चांस, यू नो, व्हेन इट कम्स टू एम्बापे। बट देन अगर यू नो एज PSG डेड, मैं इस बारे में अपने स्ट्रीम पे भी पहले भी बात कर रहा था कि द ओनली ऑप्शन दैट वी कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट थिंक हमारे पास 180 मिलियन है खर्चने को जस्ट ऑन एम्बापे, यू नो। So we should definitely try one thing what PSG did. Sorry Suraj bhai, sorry, I know you have just got in, I will just finish it. थोड़ा एक्साइटमेंट मोड में अभी यार। सूरज क्या हाल है भाई? नाइस टू सी यू यार, सब बढ़िया। नहीं मैं ये कह रहा था 180 में आएगा भी नहीं वो, मुझे लगता है PSG से 180 में आ जाएगा, इजी आएगा भाई, इसलिए बता रहा हूं इजी आएगा बिकॉज़ एक्सटेंशन नहीं साइन कर रहा है ना बेसिकली। एग्जैक्टली, जब पूरी दुनिया को पता है कि ही विल लीव ऑन अ फ्री, अनलेस और अनटिल उसको भाई सामने बिठा के यू नो गन पॉइंट पे उससे डील साइन करा ले कि भाई तू 5 साल और खेलेगा PSG में, या उसके घर वालों को उठवा ले, बोले चल भाई तू कतार चल, तू कतार प्रीमियर लीग खेलेगा अब से,
तो वो अलग की बात है फिर। अभी तो नहीं, लेकिन उसने बिल्कुल अंशुमन legal- एक और चीज है ना, देखो मतलब जो मार्केट वैल्यू 180 बोल रहे थे ना, आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड डिड नॉट इवन नो अबाउट दिस शॉक। ये जो 2024 और 2025 वाला जो चीज है ना, हाँ। इट वाजंट ओपन इन द ओपन, मतलब पब्लिक थोड़ी था, मतलब दैट वाज डेफिनेटली अ शॉक। और लोग बोल रहे हैं भाई एम्बापे हैज गॉन बैक ऑन हिज वर्ड, लेकिन द फैक्ट इज वो 2025 वाला जर्सी उठा के जो किया था एटसेट्रा, तो वो आप अगर देखो transfermarket.com कहीं भी देखो ना, वो बोलता है कि 2025 तक है, तो बेस्ड ऑन दैट 180 मिलियन है। तो आई थिंक वो नेगोशिएशन के लिए प्लस द कतारी ग्रुप, आई थिंक मेरे ख्याल से तंजवन, आई थिंक देयर इज अ चांस, लेकिन वही रियल मैड्रिड ऑब्वियसली हैव द बेटर चांस बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर कहां जाना चाह रहा है। नहीं, 2+1 का ही 2+1 का ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 2025 तक तो कंफर्म है ना, 2025 तक का तो कंफर्म सीन है, नहीं है, मतलब दैट्स द थिंग। सो द थिंग इज ही हैड टू, हाँ, तो अगस्त पर, दैट इज द थिंग राइट। अगस्त में बेसिकली, अगस्त से पहले अगर वो कंफर्म नहीं करता है, देयर इज अ डॉटेड लाइन जहां पर उसको कंफर्म करना है कि बेसिकली वो एक्सटेंशन इज डन। इट वाज मोर लाइक गुडविल वाला 2+1 वाला, लेकिन ऑन पेपर 2 इयर्स का था। और ये जो बाय डिफॉल्ट किक इन होता है अगस्त में, अगर अगस्त से पहले वो मना कर देता है तब नहीं होगा वो। दैट्स व्हाट द थिंग इज। तो इसलिए बवाल मचा ना लास्ट या 24 घंटों में। फैक्टर समझा। वैसे अंशुमन भाई, आप पटना से हो? हाँ भाई, पटना नहीं, हाजीपुर। अच्छा, मतलब पास ना भाई, लेजिट भाई, फैक्ट। आप ऐसे बोलते हो और मेरे को ऐसे लगता है हाँ यार मेरे को ऐसे लगा तो मैंने पूछ लिया। और हाँ भाई। स्वरूप ने क्वेश्चन पूछा है कि रियल शुड, मतलब बेसिकली हिज ओपिनियन दैट रियल शुड ट्राई जोनाथन डेविड। आई थिंक he is the best signing for Manchester United. Jonathan David is the perfect Manchester United kind of striker that they need, because सस्ता भी पड़ेगा और वो बिल्कुल सस्ते की बात अब करते ही भाई हम। हाँ, अब तो भाई डायरेक्टली कोलोमुआनी जाएंगे भाई, इफ नॉट एम्बापे। आप बताओ कितने चाहिए तुम्हें कितने चाहिए? लेकिन तुम्हें कतार में लैंड सब कुछ दे देंगे। बेटर देन कोलोमुआनी फॉर श्योर, बेटर देन कोलोमुआनी। हाँ, मैं बहुत वही वाली प्रूवन, बात, मतलब we never फैक्ट है, tried मतलब for प्रूवन David. तो ज्यादा है। In my opinion, I don't think David is what we need. ठीक है, वो पिछले सीजन he was struggling in France, उसका एक सीजन बहुत तगड़ा गया था। After 6 that, he महीने should have, स्ट्रगल कर रहा था। हाँ, 6 महीने, Before the World Cup। उसका स्ट्रगल ही सिर्फ 6 महीने है, उसका स्ट्रगल ही सिर्फ 6 महीने है। और उसमें मैं वर्ल्ड कप इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर उसने वर्ल्ड कप में वो वाली परफॉर्मेंस दे दी होती ना जो कंसिस्टेंटली देता है, क्योंकि अगर किसी ने भी जोनाथन डेविड का आर्क देखा है, जिस हिसाब से उसने ग्रोथ मारी है, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आउट देयर। मतलब कैसे कनाडा में ही खुद को हाँ, रिटेन मतलब करके उस बंदे ने पीपल आर अपना एक ऑलरेडी लीग वर्शिप, बनाया। कनाडा में तो ऑलरेडी वर्शिप कर रहे हैं यार। देखिए होगा ना, एक होता है कि when you are on the market, ठीक है, एक होता है कि अगर तुम उस तरीके से टैलेंटेड हो या if someone is behind you, तो वो सबसे लिंक होता है। जोनाथन डेविड से ना स्पर्स तक लिंक नहीं है, लेट अलोन यूनाइटेड। ठीक है, हमें दुनिया भर के सारे स्ट्राइकर जो 30 साल से लेके जो 20 साल तक के हैं सबसे लिंक कर दिया। वी आर नॉट इवन नियर बाय जोनाथन डेविड। देयर इज अ रीजन। हमारे मैनेजर के हिसाब से इज नॉट गुड इनफ। हमारे ही मैनेजर के हिसाब से 20 साल का हम लंडा उठा लेंगे, वो ज्यादा बेटर है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज प्रोजेक्ट अलग है। ही इज नॉट लुकिंग फॉर अ, बिल्कुल जो मार्क्समैन बोलते हैं ना, वो नहीं चाहिए उसको। ही नीड्स समवन हु कैन फिनिश बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हु कैन कीप द गेम मूविंग। ठीक है, उसको स्टैटिक नहीं चाहिए। रोनाल्डो वाज वेरी स्टैटिक। मैं एक्चुअली इज अ वेरी प्रेसिंग प्लेयर। हाँ ना, आई सेकंड सूरज वहां पर अंशुमन। द प्रॉब्लम इज यहाँ पर देखिए, व्हेन ही वाज एट आयाक्स थिंग्स वर डिफरेंट। जो हम बोल रहे हैं ना, आयाक्स में बेसिकली जब था एरिक टेन तो वो डिफरेंट थे, क्योंकि वहां पर सेबास्टियन हेलर का बजट था। तो आप उस काइंड ऑफ स्ट्राइकर में देख रहे थे, ही फिटेड इन वेरी वेल टैडिच। वो जो जोनाथन डेविड कुड प्रोबब्ली डू बेटर, इनफैक्ट जो लिंक अप प्ले हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली मूवमेंट, वो बंदा वाइडिश भी खेलता है फॉरवर्ड, तो विद रैशफोर्ड इट विल वर्क वेल। लेकिन अगर आपके पास बजट है, से जस्ट ऑन पेपर कोलोमुआनी या एक एम्बापे के लिए बजट है, तो आप व्हाई वुड यू गो फॉर जोनाथन डेविड? आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट. And plus bigger statement signing, like Kolomuani makes a bigger statement as compared to Jonathan David because of their country also, because he played for France in the World Cup. मेरे हिसाब से the reports that I am looking at, we are not in for Kolomuani seriously, to be very honest. We are looking for Højlund and we are out of Kane वाला रेस। Oh, Rasmus. लेकिन 80 मिलियन आया अर्लिंग लगा मुझे। 80 मिलियन इज टू मच। 80 मिलियन कोई दे रहे हैं? अब भैया कल को अब तो चेल्सी में मांग रही है ना 80 मिलियन माउंट के लिए, हम दे थोड़ी रहे। मांगने को क्या है? मांगने को मैं कल वो मांग लूं बैठे बैठे यहाँ पे, मेरे शादी करा दो उससे, मेरे को मिल थोड़ी जाएगा कुछ। वही है कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनरियलिस्टिक। तबीयत से पत्थर मार के तो देखो यार। नहीं, दो तीन डिमांड्स अनरियलिस्टिक है। चेल्सी कैन इजीली गेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाउ दैट वी हैव मनी, चेल्सी अगर सेंसिबली ये चीज देखे,
एक बंदा जो बिल्कुल साइन करने को तैयार नहीं है, he can easily leave for free next season, उसके तुम आराम से 50-55 मिलियन ले सकते हो। तुम 70 के टाइम पे ना तुम 70 करते रह जाओगे, और उस टाइम पे अगर कहीं और पे देख लिया ना, वो 70 जीरो हो जाएगा नेक्स्ट सीजन। वो भले ही हमारे पास ना आए, बट वो 70 के काफी चांसेस है जीरो हो जाने के, क्योंकि अभी भी वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तो सुनना ही नहीं है, मेरे को बात ही नहीं करनी, ठीक है, मेरा हो गया जो होना था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट मेरे को 2 बार ही दिया, मेरे को नहीं चाहिए, आई वांट टू मूव आउट। ही इज विलिंग टू वेट फॉर यूनाइटेड, यू नो, बिकॉज एरिक टेन हाग का इंटरेस्ट है, अब दुनिया को पता लग गया है। So 55 लास्ट million 48 आवर्स में अपडेट भी है ना अंशुमन, दैट द फैक्ट इज नाउ पोचेटिनो का बेसिकली वापस से ना ये हो रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कंसीडरिंग नाउ काई हावर्ट्स आर्सेनल से इंटरेस्ट इतना ला रहा है, प्लस द फैक्ट दैट यू नो वी आर ऑलरेडी गेटिंग रिड ऑफ कोवाचिच, और कांटे ऑलरेडी चले गए, तो आई थिंक लास्ट 48 आवर्स में ये भी आ रहा है, एज मच एज यूनाइटेड वापस ट्राई करी। और देखो प्लेयर को इश्यू नहीं जाने का, ऐसा नहीं है कि बेसिकली से अनलाइक लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द पास्ट, ऐसा नहीं है कि वो ही वांट्स टू लीव चेल्सी, ऐसा है कि बेसिकली बिकॉज यूनाइटेड इज कमिंग एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड इज अ ह्यूज क्लब, और एरिक टेन हाग भाई एवरीवन यू नो रिस्पेक्ट्स हिम, और उसका एक फुटबॉल फिलॉसफी उससे बात हुई है, एंड आई थिंक ही इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी यूज्ड एज अ प्रॉपर नंबर 8 एंड नॉट अ नंबर 10 और अ नंबर 6, तो वहां पर ही इज प्रोबब्ली सोल्ड ऑन दैट। लेकिन द फैक्ट इज अगर पोचेटिनो कैन प्रोबब्ली इन पर्सन आ जाए, मतलब अगर 2 हफ्ते में और बेसिकली कन्विंस करते तो अलग चीज, आई डोंट थिंक इज टॉकिंग टू द डायरेक्टर ऑफ चेल्सी, वो अगर पोचेटिनो चेंज कर सकता वही एक लौता इंसान है चेंज कर सकता, लेकिन अगेन गोइंग बैक टू इट Anshuman, I would rather take Mason Mount to let go on a free to a rival next season. I know it's not my money, or rather than that, भाई अभी 50 मिलियन में मैनचेस्टर यूनाइटेड जाए। देखिए आज के दिन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काइसेडो, a guy who's literally proven for nearly 12 months in England, हम बात करें 80 मिलियन, और वो चोरी करती है, ब्राइटन लिटरली रॉबरी करती है भाई क्लब्स के साथ, और स्पेशली चेल्सी और लिवरपूल के साथ तो भाई अलग ही उनका नाता है, बट 35 मिलियन में मैकलिस्टर, हाँ तो इट डजंट मैटर ब्रो, इट डजंट मैटर। तो आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और व्हाटएवर इट इज, मेसन माउंट आज के दिन में इफ एनीवन इज सेइंग बरेला यहाँ पर, अगेन दैट्स अ रॉबरी फॉर यू नो 50 मिलियन, वो होने नहीं वाला, हम बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए मेसन माउंट इज इन दैट लीग ब्रो, इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर दैट इज जस्ट दैट बहुत ही बेकार रहा है लास्ट 6 महीने बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ थिंग्स एट चेल्सी। आई स्टिल बिलीव दैट ही इज अ प्रॉपर इंग्लैंड इंटरनेशनल। भाई टूकल फर्स्ट स्टिंट लैम्पार्ड, नॉट द रीसेंट स्टिंट लैम्पार्ड एज वेल एज साउथगेट, अपने से तो ज्यादा फुटबॉल देखते जानते हैं, और ऐसे भी नहीं है, आप कोई भी ले लो, कोई भी मैनेजर ले लो वर्ल्ड फुटबॉल में, दे विल से दैट मेसन माउंट इज लिटरली व्हाट एक बोलूंगा, टूकल लैम्पार्ड में सारी बात मान लूंगा, दे नो मोर फुटबॉल देन अस, साउथगेट को नहीं आता, हम तीनों में से उससे उसको फुटबॉल नहीं है, ठीक है, नहीं लेकिन 50 मिलियन इज पीनट्स आज के दिन में ब्रो। कमेंट सेक्शन में जितने भी भाई लोग हैं उससे उसको भी ज्यादा नहीं आता, ठीक है, साउथगेट की बात ना करो, मैं लैम्पार्ड पे पत्थर रख के बोल दूंगा कि ही इज गुड, बट अगर मेरे से कोई बोलेगा कि बोलो साउथगेट अच्छा है, तो उससे बढ़िया बोलूंगा भाई मेरे को मार दे, गोली मार, बात खत्म कर, मतलब ही इज द वर्स्ट मैनेजर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो नेशनल टीम के साथ है कैसे, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। गोल्डन जनरेशन वेस्ट हुए जा रही है। अच्छा लेट मी पुट इट दिस वे, भाई सब लोग चैट में भी और पैनल में भी आप बोलिए, इट इज बेसिकली सेइंग दैट अगर बेसिकली जस्ट एग्जांपल दे रहा है, नो डिफरेंट पोजीशन है, बट होम ग्रोन प्लेयर, समवन हु इज बेसिकली प्रॉपर चेल्सी, यहाँ पर अगर से फॉर एग्जांपल ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज समवन हु कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशंस आज के दिन में, कंसीडरिंग जो हुआ है लास्ट सीजन में, ऑल्दो वो डिफेंसिवली बहुत इश्यूज रखता है, लेकिन अटैकिंगली इज वन ऑफ द बेटर राइट बैक्स फॉर श्योर, प्लस समवन हु हैज शोन दैट ही कैन प्ले इन मिडफील्ड एज वेल। तो वैसा प्लेयर जो है, सपोजिंग उसका 1 साल बाकी है और वो एक प्रीमियर लीग राइवल को बेच रही है, ठीक है, प्रीटी श्योर है लिवरपूल कम से कम 60-70 मिलियन मांगेगी भाई, मतलब दैट्स अ, इवन दो वो फ्री में है, दैट्स अ थिंग, that's one of the biggest bargain, that's one of the 60 exactly, million for तो हम ऐसे, और ट्रेंड का इतना क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म आया भाई, हम यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रख रहे हैं, मेसन माउंट भाई हम इतना क्यों भूल जाते हैं, नहीं भैया, लेकिन I think Trent Alexander as a right back has a very big stature as compared to Mason Mount as a center mid. Like I would consider, मैं अगर दुनिया वर्ल्ड ब्रैकेट में अगर रखने जाऊंगा, ट्रेंट अलेक्जेंडर्स ब्रैकेट इज मच हायर देन व्हाट विल नहीं मतलब देखो विल बी फॉर मी, अगेन वही आर्ग्यूमेंट है ना, क्योंकि हम यहाँ पर स्टार्ट्स पर जीते हैं, यहाँ फॉर मी देखिए वर्ल्ड फुटबॉल में, एंड दिस इज प्रूवन, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टैट्स वाले बोल दो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट नंबर 8 इन द वर्ल्ड आल्सो, मेसन माउंट नॉट इन द लास्ट 12 मंथ्स, हम भूल जा रहे हैं यार भाई, जस्ट गो बैक 12 मंथ्स अगो, Mason Mount was in the conversation in the top 15, at least top 10 to 15 number 8s in the world, और मैं यहाँ पर people will forget and people will laugh at me definitely, मैं यहाँ पर I'm sticking out my neck, मैं बोल रहा हूँ भाई Mason Mount has been there, done that, literally हर एक गेम खेला है, be it for England, be it for Chelsea in the last
36 months ले लो भाई, apart from the last maybe 7 months after the World Cup, भाई he has not played enough, ठीक है, लेकिन he has नहीं, literally been there in every game, और every game में वो दिया है भाई 7 out of 10 every game में, और प्लस भैया आप उसके नंबर्स भी देख लो भाई, मैं तो बोलता हूँ डबल डिजिट नंबर ऑफ गोल्स प्लस असिस्ट लास्ट सीजन। I don't देखिए think यार, आप इसे ट्रेंड से कंपेयर कर सकते हो एज अ नहीं तो मैं सिनेरियो बोल रहा हूँ, व्हाट ट्रेंट इज टू लिवरपूल इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस, व्हाट ही मींस टू लिवरपूल एज अ लिवरपूल बॉय, ठीक है, दैट इज व्हाट मेसन माउंट मींस टू अस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप प्रीमियर लीग राइवल को दे रहे हो भाई, प्रीमियर लीग राइवल को 50 मिलियन में नहीं दे सकते हो, सिंपल एज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट इवन एग्री व्हाई आर वी गिविंग टू प्रीमियर लीग राइवल, हम बेसिकली डॉटमंड बन गए भाई। व्हाट स्पर्स, द माइटी स्पर्स आर डूइंग विद हैरी केन, दैट्स द ट्रीटमेंट। कोई टेंशन नहीं है, इस बार 50 में मत दो, अगले साल फ्री में ले लेंगे। हाँ, लेट्स गो, तो होने दो ब्रो। सब मैं तो अंशुमन, मैं तो ये चीज कहता हूँ भाई, like for example Mason Mount and with Harry Kane also, these are boyhood players, you never know next season दोनों क्लब का कैसा जाएगा, you never know। स्पर्स के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर, उनको सिर्फ 2-3 पोजीशन पे डिसेंट लेवल प्लेयर चाहिए। मतलब अगर गलती से एक ग्वार्डियोल जैसा सेंटर बैक आ जाए ना स्पर्स में, स्पर्स इज अ टॉप 4 साइड गारंटीड। देयर इज आई कांट, एक चीज बोल देता हूँ, ग्वार्डियोल आएगा ना, he will play like डेविस, ठीक है, he will play like डायर। मैं एक चीज बोलूंगा, ये उनकी मेंटालिटी में ही वैसा है, ठीक है, ये क्लब कभी जीता नहीं कुछ, ठीक है, वो प्लेयर वो टॉप के लेके बैठा हुआ है, यू आल्सो नो इट। रोमेरो को देख लो यार, रोमेरो की परफॉर्मेंसेस कितनी ऊपर कितनी नीचे है, ठीक है, लेट्स नॉट इवन कंपेयर, कहां पे है, व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही डज, मैं ये बोल रहा हूँ। You know, जब वो एटलांटा में था, he used to basically rule over the defense, ठीक है, 3 बंदों को साथ में लेके चलता था। लास्ट ईयर he was one of the best defenders। इस साल उसकी इंजरी रिकॉर्ड बहुत है, वरना वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी वो है, वो पिछले साल की नहीं किया है उसके स्टैट्स दिखाओ, फिर 2 साल पहले के स्टैट्स देखो, क्या रिवोल्यूशन नहीं किया उसने। नहीं यार, ग्वार्डियोल की बात हो रही है ना, नहीं, क्रिस्टियन रोमेरो पिछले साल रोमेरो बहुत ही पोल सपाट नहीं होता, या तो भाई सर्टेन गेम में बहुत ही अच्छा होता है, या तो बहुत ही बेकार होता है, और वो उस बंदे के एंड द रीजन बीइंग अटलांटा में अगर आप उसकी पेयरिंग देखोगे ना, अटलांटा में ही हैड प्लेयर्स जो बेसिकली क्रिस्टियन रोमेरो, अ गाय फ्रॉम यूवेंटस में उसका नाम थोड़ा भूल रहा हूं, जो टर्की का मेन सेंटर बैक है, आई रिमेंबर, क्योंकि बैकलाइन बहुत अच्छी थी उनके पास, रॉबिन गोसेंस वगैरह बहुत, उनके पास हर एक पोजीशन में देयर वर प्लेयर हु वर मोर ब्रिलियंट। हाँ, उनका तो बैकलाइन जो क्रिस्टियन रोमेरो के साथ खेलता था, दैट बैकलाइन वाज सो गुड कि वो पूरा बट चुका है। मतलब उस बैकलाइन में मुझे लगता है आज कोई भी खेलता है, इवन फ्रॉम गोलकीपर टू एवरीथिंग। गोलकीपर भी मुझे याद है, डिमशिटी एक है, टोलोई लेके आए हैं वो, दे हैव डेमिराल, बट डेमिराल barely plays, and they have Maile is still getting into it, and उस तरफ कौन है, क्या तो नाम है उसका, हाटेबोयर कभी खेलता है कभी नहीं खेलता है। हाटेबोयर तो उसके पीछे, कस्तान्या के पीछे खेलता था, तो मतलब वी नो कि उनका क्लब तो बहुत डिप्लीट हुआ है। तो मतलब क्रिस्टियन रोमेरो जो पिछली साल मतलब उस समय अटलांटा की जिस बैकलाइन में खेलता था और जिस बैकलाइन में अभी खेलता है, एक तो पहली बात स्पर्स की बैकलाइन भी बहुत यंग है। मतलब अगर मैं देखूं उनके पास, अगर मैं सिर्फ बैकिंग में अगर देखने जाऊंगा ना, द नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव इन ईच पोजीशन, लाइक फॉर एग्जांपल उनके पास राइट बैक कैसे है, इवन पेरिसिच, रेगुलियन अगेन इज देयर प्लेयर, पेरिसिच, रेगुलियन, और एक और उन्होंने राइट बैक साइन किया था ना, देयर इज अनदर लेफ्ट बैक दैट दे हैव, उनके पास एक और लेफ्ट बैक है उनके पास राइट बैक में, सेसेनियन, और वहां पे है वो सबसे क्या कहते हैं, डेंजल डम्फ्रीज इफ ही हैड नो ब्रेन्स, तो एमरसन रॉयल, क्या नाम है आपका, ये पेड्रो पोरो एंड जेड स्पिंस, सारे प्लेयर उनके पास, मतलब आप हर पोजीशन तो भाई ऐसी मतलब फ्री मिली, आई डोंट नो व्हाई दे टुक हिम, टू बी ऑनेस्ट, and they have done it with so many players. I remember they have Joey Roden in their center back position. There are so many players. अगर मैं सिर्फ ऐसे, if you are a person जिसको young players में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, उनके पास बहुत सारे, पापा माटर सार ले लो, ओलिवर स्किप ले लो, उनके पास बहुत प्यारा यंग टैलेंट है, एंड that is a team that I think कि मतलब एक सीजन में वो काफी कुछ चेंज कर सकते हैं। और चेल्सी तो बेहिमत उस चीज में एक अलग मैमथ बनी बैठी है भाई इस चीज में। अगर अगले साल यू नेवर नो चेल्सी का क्या सीजन हो सकता है भाई, अगर सीजन अच्छा जाता है ना, सारी चीजें हंकी डोरी हो जाती है। मेसन माउंट भी बहुत प्यारा लगने लगेगा सबको, और मेसन माउंट, मैं वही बोल रहा हूँ यार, मेरा पॉइंट यही है, फॉर ऑल द पीपल भाई, अब जस्ट फ्लैशबैक में जाओ, आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट गो टू माय स्ट्रीम्स, एंड द काइंड ऑफ थिंग दैट मेसन माउंट यूज्ड टू गेट द लव, द सेम थिंग हैज टोटली फॉरगॉटन भाई। गोइंग बैक टू हिज पॉइंट, जनरली स्पीकिंग, यस, यहाँ पर कोई चैट पे बोल रहा है भाई, बिग अप टू यू कि यार चेल्सी आर आस्किंग फॉर वाइल्ड प्राइसेस व्हेन इट कम्स टू हैवर्ट्स और मेसन माउंट। भाई देखिए,
आप प्रीमियर लीग राइवल को दे रहे हो तो वाइल्ड क्यों नहीं पूछेंगे फॉर 2 24-year-olds हु हैव द पोटेंशियल टू गेट बैक टू वेयर दे व्हाट दे वर. हम ठीक से खिला नहीं रहे उनको. मेसन माउंट in a role in a 3-4-3 in a proper inside winger which is not Mason Mount, he was still Chelsea's player of the year back to back 2 seasons mein. He won the Champions League and even in the Premier League bhai he had leading numbers in the Premier League compared with any midfielders out there. Aap numbers nikal ke lao ab at his age. I think even I know people will be feeling I'm delusional, लेकिन कहीं ना कहीं even going back to the Lampard days, क्योंकि मैंने देखा live भाई, there was a lot of times when Lampard was so young that there were issues. लेकिन Harry Redknapp, remember when he was at West Ham, did say certain things. Even in the first couple of years there were issues, but then Lampard went to the next level. Mason Mount वो चीज अभी just cross किया, अभी इतना सारा चीज change हुआ है, तो भाई you have to give it. आप नहीं मतलब आप literally if you are giving to Manchester United, Manchester City और Arsenal, Mason Mount, Kovacic और आपके Kai Havertz, तो you need money यार. या तो आप दो मत, या तो भाई proper money के साथ दो, क्योंकि यार और people saying that no one rates Mason Mount, absolutely false, because Bayern Munich etc are ready to take Mason Mount and Kai Havertz. It is just that they want to stay in England, इसलिए बातें हो रही है. Simple as that. उनकी प्रायोरिटी ये है, जैसे Declan Rice की भी हो रही है. But एक सेकंड, स्पर्स का I heard crazy bid यार. I don't know if people heard it यार. 50 million खाली bid किया for a mix of Harvey Barnes and Madison. मतलब इतना बेवकूफ समझे क्या लेस्टर को? I know लेस्टर relegate हो गई है, but still man, 50 million included Harvey Barnes and Madison. That's a bit too less. नहीं, इनको 100 प्लस चाहिए अपने 30 साल के स्ट्राइकर के लिए with 1 year on contract. Exactly. Double standards वापस. Player in Premier League ना. तुम अपने बेस्ट प्लेयर देते हो जिनकी इजीली मार्केट वैल्यू 100 to 120 मिलियन है इजीली. नहीं मतलब हाँ, इन दोनों की कंबाइंड ही ऐसा. दोनों की 100% ब्रो, 100%. अब मुझे लगा आप कह रहे हो ईच, मेरे को लगा कौन दे रहा है 120. देखो मैं वहीं पर आ रहा हूँ भाई. अंशुमन ने जो बात बोली ना, याद रखिए सब लोग भाई, अगेन पत्थर की लकीर नहीं है नो. जब हम बोल रहे हैं मैडिसन और बार्न्स को मिलाकर 100-120 मिलियन है, तो मेसन माउंट अकेला 60 मिलियन क्यों नहीं हो सकता? ही इज आर्गुअबली बेटर देन देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैज डन इन द लास्ट 4 सीजंस ऑफ द प्रीमियर लीग. मोर कॉन्फिडेंट एंड डेफिनेटली अ लीडर. मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, मेसन माउंट का जस्ट 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अगर यही 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता ना, तो चेल्सी 100 मिलियन भी मांगती, तो शूटर शुड हैव लाइंड अप, ठीक है. नहीं लेकिन देखिए, दैट इज व्हाट अंशुमन, वहां पर वापस से आप देखो, यहाँ पर लेस्टर आर नॉट अ डायरेक्ट राइवल ऑफ स्पर्स, फिर भी वी आर टॉकिंग दैट लेवल. चेल्सी आर अभी लास्ट सीजन नहीं, बट वी आर अ राइवल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट? उनको वहां से निकलना है, बट दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट. इट्स नॉट लाइक देयर कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग ओवर नेक्स्ट सीजन. सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है. एक बंदा है जो आपका क्लब छोड़ना चाहता है, एक बंदा है जो रेलीगेशन की वजह से निकलना चाहता है, बट देन वो अंदर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो चाह के नहीं निकल सकता. अच्छा नहीं, मतलब यू आर बेटर टू करेक्ट यू. मेसन माउंट छोड़ना नहीं चाहता. मेसन माउंट इज ओपन फॉर लीविंग. ऐसा नहीं कि ही वांट्स टू लीव. वो साइन नहीं कर रहा बिकॉज़ उसको जो बोला गया था वर्बली, दैट हैज नॉट बीन मेट. लेकिन अभी ऐसा नहीं, ही इज नॉट वांटिंग आउट ऑफ द क्लब. मेरे हिसाब से बहुत सेंसिटिव है भाई चेल्सी फैंस के लिए. ही इज नॉट वांटिंग आउट ऑफ द क्लब. आई वांट टू करेक्ट देयर. हाँ नहीं, मेरे हिसाब से बेटर वे फॉर व्हाटएवर रीजंस, मैं ये बोल रहा हूं, ही इज इन द मार्केट फॉर व्हाटएवर रीजंस. कोई 70 मिलियन नहीं देगा बिकॉज़ जस्ट 1 ईयर लेफ्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट. भाई अल्ट्रासोर बोल रहे हैं अंकित भैया, माउंट इज नॉट बेटर देन मैडिसन. भाई एवरीवन, मैडिसन इज वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक टेकर्स एवर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग मॉडर्न टाइम्स. इतना मैं बोल रहा हूं, ब्रिलियंट प्लेयर. लेकिन लेट मी टेल यू भाई, कोई भी आप मैनेजर को उठा के पूछो ना कि अगर आपको नंबर 8 में खिलाना है, मैडिसन हाईली हेजिटेंट भाई. द रीजन इज नॉट प्लेड इनफ इज बिकॉज उसका वर्क रेट इनफ नहीं है. मेसन माउंट आपको अटैकिंग भी देता है, वर्क रेट भी देता है, जो वर्क रेट चीज भाई हम as FIFA lovers, as just stats lovers, we forget out of the window. Bro, again, आप लोग अगर खेलते हो और अगर मैनेज करते हो, कोई कोचिंग आपने सीखी है, तो भाई telling you, Mason Mount is a dream for every manager. I'm telling you directly. भाई people might feel I'm delusional. हम भूल जाते हैं, लास्ट 7 महीना हमको याद आता है, बाकी 30 महीना हम भूल जाते हैं as football fans. I know I'm worked up, but I'm worked up for a reason, because Mason Mount is not some ऐसी लड्डू पेड़ा नहीं है भाई. तो let's get it right. नहीं फॉर श्योर. मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने आपके स्ट्रीम पे भी बोला, आई हैव नॉट आई डोंट रेट मेसन माउंट दैट हाईली. मैंने आपको ये पहले चीज भी बोली है, बट हां कोई ये he is not a Foden. I agree he is not a Foden, but he is definitely better than Madison. Let's get it right. बट अगर आप गोल कंट्रीब्यूशन में देखोगे ना, मतलब
हाँ, लेकिन मेडिसन का एक और जो बहुत अच्छी चीज है कि मेडिसन, अगर आप देखोगे कि द परसेंटेज गोल कंट्रीब्यूशन फॉर अ टीम मेडिसन का बहुत हाई है, हाईएस्ट इन द No, लीग there also I इज disagree. There also I disagree. Mason Mount, जो हम बोलते हैं ना, Hazard carried the team. Mason Mount carried the team for 2 seasons. हम भूल जाते नहीं, हैं वापस जाके देखिए. मैं सिर्फ गोल कंट्रीब्यूशन, मतलब ये गोल स्टैट है कंट्रीब्यूशन बोल रहे हो मेरे भाई. 50 He got double digit number 52%, of goals. 50 Let me get it right again. Mason Mount in a season जहां पर हमारे strikers and so called भाई अपने 80 million players did not score goals. He still got double digit number of goals and double digit number of assists last season. जब लास्ट सीजन हम 72 किए थे, याद रखिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस लीग सीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीजन आफ्टर दैट. वहां पर भी मेसन माउंट के थे नंबर्स. हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रखते हैं, हम सब गजनी बन जाते हैं भाई. अरे मैं फुटबॉल में भैया I'm telling you guys. मैं मेरे को ट्रांसफर उस हिसाब से चलती है. मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आई वुड आल्सो आई सेकंड हाँ, दैट. तो मैं यहाँ नेगोशिएट ना चेल्सी का समझ, तो कोई भी नेगोशिएट कर रहा था, he should be remembering that, bro. नहीं, You're talking about Mason Mount who's not like as in all of a sudden हम Mason Mount को This- बोल रहे हैं he's become a Dele Alli. Dele Alli का भाई क्या ड्रॉप नहीं, हुआ था नहीं, भाई. नहीं, There's a huge नहीं, difference. नहीं, तो we are not going to do that that, is not right for sure. That is ये not right. फालतू वाली लेकिन बात है, Delhi just Hernandez just a stat Again, मैं देखो भाई, I know I'm I'm taking chat again. Ultrasur again coming to your point. I know मैं ignore कर सकता हूँ आराम से, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहूंगा. Madison carried Leicester and Leicester got relegated. Mason Mount carried Chelsea. Chelsea, when he was literally a kid, Chelsea finished top 4 and Chelsea won the Champions League. There's a huge difference, my bro. he Ultrasur. won them FA Cup. अभी just In the FA Cup season, मतलब just in that season, fair enough. But are you comparing Mason Mount carrying Chelsea when we won the Champions League versus Mason Mount carrying Chelsea when we reached top 4 in the season when we had kids? I don't think there's even comparable, to be honest. नहीं, Madison, but we are are overall, I would definitely pick Mason Mount. but what Madison does in आपका ये क्या नाम है लेस्टर सिटी, just ये stat है. This is a stat everybody can go and check. Highest क्या कहते हैं goal contribution by a single player to a team goals is Harry Kane. उसके 52%. Spurs के 52% goals में either he has assisted or scored. ठीक है. I think James Madison comes in the top 10 list. उसका है 38% का कंट्रीब्यूशन. बहुत अच्छा है यार. मैं तो बोलता हूँ काफी अंडररेटेड प्लेयर है, बट जनरली यू कैन नॉट से दैट, यू नो, एज एन इवन मेसन माउंट डिड नॉट डू दैट. मतलब इट्स एटलीस्ट भाई एटलीस्ट इक्वल और क्लोज टू इट है. दैट्स व्हाट आई एम Train Rupam, train. They will train in a week. That's what's supposed to happen. भाई Kylian Mbappe, I don't know later. Man, this man. I'm telling you, if Darwin Mayonnaise is 100 million, then Mason should be 200, bro. Well, Darwin that's Nunes, a bit too much, but thanks for the comment, bro. Darwin Nunes is a phenomenal player. My goodness, bro. But what has he done, talent bro? नहीं देखा. What has he done till now? That's my whole point. What has he done? What has he done till now? Please tell me, someone. What has Darwin Nunes done till now? Please tell me. क्या किया है वो आज तक? अगर मेसन माउंट के अचीवमेंट्स एज एन इंडिविजुअल बोल रहे हो, इट्स नोवेयर क्लोज, ब्रो. डिफरेंट प्लेयर्स ऑल टुगेदर. नहीं, फॉर श्योर भैया. द थिंग इज उसका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का बचा हुआ था. एंड प्लस इफ यू आर कोटिंग मी अ प्लेयर लाइक डार्विन नूनेस, आई फॉर श्योर कैन सी अ प्लेयर हु कैन बी समथिंग फिनोमिनल, जिसका वैल्यू 100 मिलियन से बहुत ऊपर है. ही इज अ प्लेयर जो बहुत एलीट ब्रैकेट में जा सकता है. लेकिन वो वही है ना, आप शूटिंग इन द डार्क वाला चीज हो. यहाँ पर एक बंदा आपको द बिगेस्ट प्राइजेस इन फुटबॉल जिताया है एक टीम को, तो वो आप नहीं क्वेश्चन कर सकते. One year is the point. 60 million for Mason Mount makes sense, but I think the point नहीं, तो वही है ना, आप 1 year जो वापस बोल रहे हो ना, हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर, लेकिन 1 year is not, it negates by the fact that he is English, he is an English international. English tax लगता है. अगर बाकियों के लिए लगता है, हैरी केन के लिए लगता है, तो मेसन माउंट के लिए क्यों नहीं लगेगा भाई? ही इज आल्सो अ लीडर. आप यहाँ पर मेडिसिन का बोल रहे थे ना, लीडरशिप जो है मेसन माउंट के अंदर भाई कूट के, वो तो पीपल आर फॉरगेटिंग द फैक्ट इज इंग्लिश एंड यू आर सेटिंग टू एन इंग्लिश राइवल. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस यार. तो जो 1 year चीज है ना, वो नेगेट हो जाता है तीनों चीज से ट्रांसफर मार्केट, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसफर मार्केट. नहीं भैया, मेरे हिसाब से तो द टाइम स्पीक्स वही वाली बात है कि एक तो पहली बात रिसेंट बहुत, ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज है. नहीं, मैं बोलता हूँ फैक्ट है कि भाई चेल्सी ने खरीद लिया 40,000 प्लेयर्स. ठीक है, पूरे दुनिया को मालूम है कि हमने फीफा खेला है while buying, and now we are playing FIFA while selling, because पॉचेटिनो को चाहिए ट्रिम्ड स्क्वाड. हमारे पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, तो क्या करेगा इतने सारे प्लेयर्स के साथ, जो ऑलरेडी पॉटर और लैम्पार्ड का हमने देख लिया है. तो द पॉइंट इज यहाँ पर
because we are in that situation, we are forgetting. But if it was a 23-man squad of Chelsea, pretty sure यहाँ पर Chelsea यार बात भी नहीं करती 50 million में भाई मुंह भी नहीं दिखती to be honest. And that's the reality. He's not एक साल बाकी है, I know he might go on a free, but अभी मैं बोलता हूँ, I rather have my Cobham boys who have finally proven go on a free to opposite say other leagues rather than going to Manchester United for 50 million. और इवन भाई Kai Havertz का सही बात है, 40 Spurs are doing the very same. seriously. So ये बिल्कुल सही अप्रोच है. I completely I back that 100% कि एक मैनचेस्टर यूनाइटेड को तो मुझे नहीं देना है. मैनचेस्टर यूनाइटेड 50 मिलियन में लेगी, मुझे देना ही नहीं है. If they are Spurs नहीं देती यार, कहाँ Spurs are not even in the top 4 race very often. वो ही नहीं देते. They are like कि हाँ हैरी केन के साथ वो लोग ऐसे, this is one of the biggest asset that they have. उनका क्लब रनिंग बजट आ सकता है एक सीजन का from selling हैरी केन, but they are like nah bro, we aren't selling it to you. चाहे हम अगले साल रियल मैड्रिड को फ्री में ऑफर करेंगे कि आप फ्री में हैरी केन लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एम्बिशन वाला पता ही नहीं है कि वो रियल मैड्रिड जाए, वो यहीं रहेगा. देखना अभी 6 महीने में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा. एक तो ये बहुत मेरे को सबसे घटिया आर्गुमेंट ये चीज लगती है कि कोई अगर हैरी केन को मत मानो, है नहीं 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इन द प्राइम एज अ 24 year old. ठीक है, आफ्टर स्कोरिंग गोल्स फॉर 4. That's loyalty, that's ambitious, that's being ambitious. यहाँ भाई ब्रो वो इंडिविजुअल, वो बंदा जो अपने लेवल पे कर सकता है ना, वो टीम नहीं चला सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एक्सेप्ट ही इज अ प्लेयर ब्रो, ही इज अ प्लेयर, ही इज नॉट अ मैनेजर. ही इज एम्बिशियस, दैट्स इट. मेरे लिए ambitious नहीं है भाई. तुम्हारे में टेल मी वन प्लेयर दैट कैन बीट एलन शेरर रिकॉर्ड इन योर क्लब. Tell me one player that can beat Alan Shearer. One trophy that Harry Kane can win in the next 5 years. बता तो फिर. FA Cup, that's the biggest trophy your club has won in the last half. उसने वो भी जीता. जीत सकता है बिल्कुल भाई. वो ट्रॉफी he has been in the final of that. He has been in the final of very soon. कप लेके घूम रहा है. That's what he's getting. नहीं लेकिन अंशुमन इज द पॉइंट यार. सूरज देखिए वो बंदा ना नहीं चांसेस बहुत थे भाई हैरी केन के पास. He is not ambitious. मत मानो. He is not ambitious, the world knows. ये तो बहुत ही स्टूपिड आर्गुमेंट है. ये तो बहुत ही स्टूपिड आर्गुमेंट है. ये तो बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट है भाई. ये चीज कहना कि हैरी केन भाई, क्योंकि ये स्टूपिड है, क्योंकि सिंपल सी बात है, तू एक प्लेयर को लेस एम्बिशियस इस चीज वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन कर रहा? व्हाई इजंट ही साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाई इजंट ही साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? खत्म हो गया क्या? ही साइंड अ 6 year कॉन्ट्रैक्ट इन अ प्राइम. किसको देखा भाई प्राइम में 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन भाई? वो क्लब उसके बाद चैंपियंस लीग फाइनल में गया है. वो क्लब प्रीमियर लीग के लिए लड़ा है भाई. नहीं सूरज, वेरी गुड पॉइंट. देखो उस समय था, देखो उस समय डेफिनेटली लुक्ड लाइक हैरी केन वाज. प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहीं पर आया ना उसके बाद में जो हुआ है. पहले सेलिंग पॉइंट था कि मूरिन्यो की वजह से है. मतलब अगर हम बोल रहे हैं दैट हैरी केन इज देयर ओनली बिकॉज ही इज लॉयल टू स्पर्स, आई वुड लाइक टू हाईली डिसएग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल यस वो एम्बिशियस था, ठीक है, वो भी है. सूरज का पॉइंट आई एग्री, बट यहाँ पर देखिए मूरिन्यो लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद क्या बेसिकली कॉन्टे, मतलब was he sold on Conte? Even Harry Kane knows that Conte long term नहीं है. Everyone knew that. ठीक है. Jose Mourinho was the last manager when he was stable at the club. Fact है, सही बात है. अच्छा, और सेकंड चीज आप देखो, जो हम चीज हम बोल रहे थे ना इंग्लैंड टीम का साउथगेट वाला बात बोल रहे थे. यू कैन गिव व्हाटएवर ब्लेम टू साउथगेट, बट रियल में ये इंग्लैंड टीम इन द लास्ट 2 years भाई, फॉर एग्जांपल यूरोज दे शुड हैव वन. ठीक है, मतलब दे यू कैन क्वेश्चन दैट हैरी केन is he having that एकदम elite mentality थोड़ा बहुत, मतलब just about compared to अगर आप बोलो आज के दिन में से हालैंड से एम्बापे से वो होता है ना, उस लेवल का मेंटालिटी नहीं लगता है मुझे. अगेन मे बी आई एम आउटसाइडर से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे he doesn't come across as that level of mentality player, but things might change. I think this is the season where he needs to prove it. If he really right colors choose, right color choose in Nathan वैसे. Sorry अंकित भैया, वैसे right colors choose. You want to be that buddy, you want to be that. You were laughing at them once. Now you're speaking. You are dying to be them. That's right. They still have no history. What do they don't have? History. They're statues of a guy who retired 2 years ago. Bro, that doesn't matter. They are creating history. They are the modern day. They're buying history. Oh, you are doing this, entering the stream, buddy. Three Champions League with a bunch of Jimmy Murphy players. They won it.
They won the Champions League, buddy. They They won the deserve to Champions win it, but still a long way to go in terms of calling them the best of the best, which I'm hearing. भाई recency bias बहुत होता है भाई फुटबॉल में. नहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो मतलब मैं वो तो चीज कह ही नहीं रहा. मैं तो कह रहा हूँ भाई हाउ टेबल्स हैव टर्न्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी, दैट्स फॉर श्योर आउट. वो Alex Ferguson said ना, not in my lifetime it has changed. That's what I'm trying. There's just something very we have to clarify, right? A lot of people are still doing this. We want SJR. We don't want the Qataris. I am very shocked and appalled by all those Manchester United fans, because even after knowing that SJR is going to keep Glazers in and add debt to our already debt, 540 million debt, the fact that people are okay with that. But those same English people will shop at Harrods. Those same people will shop at Sainsbury's. Those same people will shop everywhere else that Qatar owns hotels, partly owns hotels in England. People will stay in those hotels. People will buy those sandwiches that are cheap for the working class. Hypocrites. Listen, man. A lot of people talk about human violation. Please don't support any English club. First of all, Exactly. don't support. Bro, Don't support. you Shut the are- fuck. Bro, Shut. you No. are- you No. are- Hold on. एक चीज नितिन I was always just a Qatar small in break. because Buddy, I will buddy, never want buddy, my give me one team buddy, consuming more just- debt. दोस्तों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी थोड़ा गर्म चल रहा है माहौल, तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, फटाफट anybody who hasn't liked the stream, please do that, and anybody who hasn't subscribed the channels of Almighty Blues, Sportsnut Nathan and अंशुमन भाई का चैनल, मेरे को भी ऐसे United Road if I'm not wrong United है ना, Road. देखा? Yes, United Road. सूरज कुमार मेमोरी ब्रो. सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. बात गर्म हो सकती है, भाईचारा पूरा है, एग्रीमेंट. अरे बिल्कुल bro. That's part of the go, but yeah. That's the best part of. Passion for the club यार, वो हो जाता है थोड़ा बहुत. हाँ नहीं, मतलब fact- होना भी चाहिए यार भाई. To be honest, देखिए I respect basically everyone and anyone who's basically as in inside of knowing their club. At the same time भाई आप अपने मतलब आसाम से मतलब you're not giving donation यार, आप अपने players बाकी clubs को donation में थोड़ी दे रहे हो. So that is something that we all need to know, and that's why the transfer market is so interesting यार. Absolutely. हाँ, मजा आता है. एक तो पहली बात, I support a club जिसका नॉन एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है. मैं बस बाकियों की पढ़ रहा होता हूँ. मैं लाइक Swansea City player that they sign, I am like, अब मैं इसको पहली बार जिंदगी में खेलते देखूंगा. हैरी डार्लिंग करके उन्होंने एक प्लेयर साइन किया था. मैं ऐसे था ब्रो, इसके नाम अच्छा लग रहा है, एक बार खेलते हुए देखते हैं, क्योंकि कभी नहीं देखा. So that's my club for you guys. और तब तक मैं बस यही करता रहता हूँ, बाकियों की भाई talk about Swansea भाई. If I'm not Scott Parker भी था ना एक बार Swansea का मैनेजर नहीं था क्या? नहीं था. अच्छा, रसल मार्क. ब्रेंडन रॉजर्स का आजकल क्या हाल है? मतलब वो आ रहा है क्या? Is he coming back? मतलब ब्रेंडन रॉजर्स, and because he was linked with the Leicester job again, but I don't think he's coming back, I believe. नहीं, Leicester ने तो appoint कर दिया ना. Leicester is appointing Guardiola's assistant, yeah, Man City वाला ना. Exactly. हाँ, Southampton have also appointed. Current Swansea City manager has been appointed by Southampton because उनके Scott Parker मना कर दिया actually. First offer went to him, but he said no. For Swansea? For Leicester actually. अच्छा, थैंक गॉड Swansea नहीं लिंक थी उस आदमी से. बिल्कुल नहीं पसंद. Yeah, go on Nathan, come on, let's rant buddy. No, see, it's not a rant. Yeah. It's a state of fact. People are complaining. On one side, people say you shouldn't how are we going to get rid of the debt, right? Then on the other hand, they're saying we don't want somebody because they violate human rights. The thing is, I don't understand one simple thing. Where is this energy when PSG was bought by FIFA? Where was this energy where Man City was bought by Abu Dhabi? I'm very sorry to tell you, if you're an Indian and you're not aware of what happens there, that's your problem, not mine. Educate yourself is what I would say. And the Newcastle one, dude, when there were people standing outside St. James Park acting like they won the Club World Cup, dude, everyone was happy for them when Mike Ashley went out. But only when it comes to a certain club, that is so hated. That certain club was so hated. Bro, So hated. I am seeing hypocrisy. So hated. I am seeing hypocrisy. एक सेकंड एक चीज बता देता हूँ. This club and these fans, I'm telling you. ठीक है, people talk about oil money, they have no idea how much money United make. अब कल को चेल्सी के पास अगर कोई सपोज करो कल से चेल्सी के पास कोई ओनर आ जाता है from anywhere, ठीक है,
from anywhere and he got unlimited funds. But Chelsea के funds को discount कर देते हैं लोग. You know, when City was bought, City was on the verge of being bankruptcy. पैसा कहाँ था? नल्ले थे वो. Everything was funneled by, you know, क्या बोलते हैं उसको, अबू धाबी. That's the difference. एक होता है जिस क्लब के पास पैसा है, obviously they are coming in, they will have their money. ठीक है, अब वो किस तरीके से उसको चैनलाइज करता है, that's one thing. अब ये बोल देना भाई, अरे भाई हमारे इतना रेवेन्यू है, our owners have taken out $1 billion from our club. $1 billion, you know, उसमें जीरो कितने लगते हैं आधे लोगों को पता नहीं होगा. $1 billion taken in the last 15 years. जो हमारे क्लब पे जीरो डेट था, that debt is around 700 million now. People don't understand that. आ जाते हैं oil money. अरे है हमारे पास पैसा भाई. सामने वाला क्लब हो सकता है भिखारी for a reason, but हमारे पास है पैसा. City was भिखारी when they were bought by क्या बोलते हैं उसको, या फिर जो भी था यार, अबू धाबी, you know, या UAE जो भी है, you know, उनके पास नहीं था पैसा. That's why they are facing 115 charges पिछले 10 साल में. अब जिसकी सुलगती है भाई उसका कुछ हो नहीं सकता ना. ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर बात करो. मेरे भाई अंशुमन देख, नहीं मैं कमेंट सेक्शन 100 नहीं, अरे कमेंट सेक्शन नहीं, मैं कमेंट सेक्शन की तो बात ही अलग है. देख, बोलने वाले 10 चीजें बोलते हैं, मैं तो मस्त हंस रहा हूँ. ठीक है, मैं इस चीज पे हंस रहा हूँ कि I know your stuff. मतलब मैंने लोगों को देखा है. पहली बात तो ये कि भाई कतार के पास ना ऑयल मनी नहीं है, उनके पास गैस मनी है. तो एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो सही करो यार. उनके 70% जो पैसे हैं ऑयल एंड फैमिली. ब्रो, अमेरिका, you know, जो बोल रहा है भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है. मजाक बनाना है वो अलग की चीज है, बट बोलो तो सही, बोलो भाई गैस वाले पैसे हैं, तेल वाले नहीं है, गैस वाले. एक मस्त सा क्वेश्चन पूछूं, एक अमेरिकन ओनर किसी क्लब के अच्छे बताना, जिसके सही गए हो, जिसके सही गए. भाई उनको गेम ही नहीं पता भाई. जो बंदे फुटबॉल को क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो बंदे फुटबॉल, लिवरपूल भी गाली दे रही है अब तो. मैन यूनाइटेड, सॉरी, फुटबॉल खेले, क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाथ से खेलते हैं फुटबॉल, और फुटबॉल को बोलते हैं सॉकर. फिर बोलते हैं कि भाई क्या बोलूं मैं इस पे हंस सकते हैं बस. ए मेसी प्लेज सॉकर, एक्सक्यूज मी, द गोट प्लेज सॉकर, डोंट. So that is the reason ना, that is the reason why they are going for. देखिए बेकहम एटलीस्ट उतना तक ले गया है, अब वापस से they had to get some big names यार. Again recently Zlatan हो गया, previously I think Lampard, Gerrard गए थे for a season, Pirlo गया था. But I think वो ये marketing, I absolutely love, sorry to interrupt, I absolutely the way have taken MLS to the new heights, you know. जिस तरीके से expansion की teams दी हैं उन्होंने, जिस तरीके से they have made sure कि जो भी new team आ रही है, they have to invest this much amount on grassroots level. उनके पास उनकी academy होनी चाहिए, otherwise license नहीं मिलेगा. इतने academy के बंदे होने चाहिए एक particular time पे, otherwise license नहीं मिलेगा. And those guys, they should अच्छा, by the way, this is actually, मतलब I've been to MLS, तो this is actually a Toronto FC टी-शर्ट, वहीं से उनके स्टेडियम से ही खरीदा था ये. तो I'm telling you भाई, जो चीज है, it is definitely work in progress यार. लेकिन मैं बोलता हूँ that the passion level is right up there, absolutely right up there. मैं बोलता हूँ, मतलब people might not realize it. वो उस तरीके से गेम का ग्रोथ हुआ है. Where it was 15 years back, अगर अभी का उठा के देखो MLS, you have, you know, a minimum of 30,000. You know, 23 to 30,000 depending upon the state wise. और कुछ स्टेडियम्स बहुत बड़े हैं, कुछ स्टेडियम्स very, you know, small in stature. But बड़े गेम्स में, लाइक जो अभी नए क्लब्स आए हैं, शार्लेट एफसी हो गया, you know, एक और अभी आया है, एक और क्लब इसी साल ऐड हुआ है, I am forgetting the name. So these guys are playing in the capacity of around 50,000, सूरज भाई, you know, 50,000, 55,000, and for them it's like, भाई कहाँ खेलने आ गए हम? You know, we were not expecting this. Atlanta started the trend. अटलांटा में भाई 70,000 लोग जाके मैच देख रहे थे when Gerard Martino was the manager, when they actually won the MLS Cup. You know, 70,000 लोग जा रहे हैं भाई मैच देखने के लिए. The stadium is state of the art. वैसा स्टेडियम साला यूके में भी नहीं है. You know, हमारे स्टेडियम की तो बात ही छोड़ दो, it's in the mud. But मतलब इवन टॉप क्लास स्टेडियम्स को they can challenge. मर्सिडीज बेंज का स्टेडियम है भाई, रूफटॉप के साथ सब कुछ है उनके पास. You know, so they have advanced their you know, investment in terms of जहां पे वो अपना गेम लेके जाना चाहते हैं. ठीक है, they have built up communities. चाहे वो इंटर मियामी हो जाए, उनके अल्ट्रास का देख लो भाई, वो इंग्लैंड में घुस गए तो यहाँ के बंदों को मार के भगा देंगे. You know, so they have got that culture. LAFC का भी वही सीन है.
They have like 10,000 standing capacity, 10,000 बंदे खड़े होते हैं भाई. They have their beers, they have their flags, everything. तो वो culture build किया है उन्होंने. Expansion. क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं ना at that point of time that David Beckham भाई क्यों चले गया इतने young age में. He was not even getting the money at that point of time. When David Beckham moved to MLS, he was not even the highest paid at that point of time. ठीक है, उसको जब वहां पे घुस गया then he became. But उसका एक ही रीजन था जाने का कि जब मैं एक्सपेंशन वाली लूंगा ना, अगर मैं फ्यूचर में अगर मैं ये कहने वाला था विक्टोरिया वाज द रीजन ब्रो. एक ही रीजन था कि इफ आई एम टेकिंग अ फुटबॉल क्लब इन फ्यूचर, मैं 25 मिलियन में ही क्लब लूंगा. ही बॉट इंटर मायामी फॉर 25 मिलियन. ठीक है, एक्सपेंशन के इतना स्मार्ट अगर बेकहम होता ना, अगर इतना स्मार्ट बेकहम होता भाई, आज तो उसकी विरासतें होती. मैं कसम से कह रहा हूं. भाई अगर 700 मिलियन क्लब हो गया. इंटर मायामी इज नाउ 700 मिलियन क्लब. 25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है भाई. अगर वो जीनियस नहीं है तो फिर कौन है बता दो भाई. हम चारों में से यहाँ पे कौन बैठा हुआ है जीनियस? 25 मिलियन के 700 मिलियन, 25 मिलियन के 700 मिलियन इन 3 इयर्स, 25 मिलियन के 700 मिलियन इन 3 इयर्स करके दिखा दो भाई. नहीं, ये तो वो वाला है, लक्ष्मी चिट फंड. दिस इज ये लक्ष्मी उसके चिट भी पड़ा भाई. फंड. ये दिस इज लक्ष्मी चिट फंड. अबे भाई, लेकिन मैंने इंटर मियामी ना, जब मेसी को उन्होंने साइन किया, मैं ऐसे था भाई इंटर मियामी खेलती कैसा है. मैंने फिर उनकी लीग पोजीशन देखी. Yeah, they are 28th in the league. They are 15th in they're last in the conference. They are a fantastic team. It's a wonderful sport. Just fuck off, yeah, fuck off. मेरिट Fuck पे off. तो मैं तो मेरिट पे तो नहीं जा रहे हूँ. MLS के बारे में जानता है या नहीं कोई? MLS में भाई रेलीगेशन नहीं है. हाँ, आई नो, फ्रेंडली लीग. तुम साला लास्ट. But Anshuman, dead last is still dead last. हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना. तुम नीचे नहीं जा रहे. There is nothing to play. फायदा जरूर है. फायदा ड्राफ्ट में फायदा होता है ना. मैंने जितना सुना है ड्राफ्ट में इट इज अ एडवांटेज कि आपको कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का भाई वो उठाना है. NBA वाला सीन ही कर रखा है उन्होंने फुटबॉल सॉकर में सॉरी फुटबॉल नहीं. खराब आदमी. लेकिन भाई मैं तो, हम लोग यूनाइटेड की बात कर रहे थे. यूनाइटेड का जो टेक ओवर है, मतलब एक तो है, ये तो आप लोग मानोगे, एक काया पलटी तो है. मतलब जो I'll ask you. No, I don't agree. I'll tell you why I don't agree, right? I'll ask anyone in this chat. No, it's very easy to say all this stuff they're saying. But if I told you the same people that put us in debt are going to start with a new ownership, how many of these people would take it? Let's be honest. Exactly. You all are saying the only reason we are talking about oil money, remember one thing, the only reason we are talking about oil money is because they are the only other people that were in. The Finnish businessman who was in, they felt that they were wasting time. He came out and gave an interview personally. I've never heard a billionaire give an interview of a failed takeover of sports club until recently. He said it is run so badly by the current ownership and there is no clear way on how to get this sale, and that's why the sale itself has run this long. I'm just asking everyone in the chat one thing. If this ownership, by the way, someone said you can't call some club Bhikhari when your club's on debt. There's one great difference. The club was bought on debt. They have put debt on the club. It wasn't in debt when they bought it like Man City. There is a difference, first of all. Second of all, that ownership has not paid off the debt where they promised they would. Like any other good business person would have done it. They have not done it. Okay. So those people in the chat and everywhere else who say we should accept SGR instead of oil money, those people are saying we should have those same people that have not paid one lick of debt, taken 1 billion out of our club. We should be accepting of them because they don't want oil money and human rights. But our club can be continuously violated for another 20 years. For what? Why? For what? Explain. Because none of these people in the chat would take a ownership. But no, I'm just saying none of these people in the chat would take someone who has already put their club in this kind of financial disarray. Bro, that's my point. See, yeah, you are right. You are perfect. You are summing things up perfectly. There isn't any doubt about it. Okay? I completely agree with you. But the point is how tables turn. It's like a life lesson. If you have something, but the tables only be turn. humble about it. No. But see, hold on a minute. I'm only quoting City with it. If this ownership comes in, right, and they do it the right way, we can always still say City has 115 charges to their name. They have technically, you have not seen how this club is run yet under this ownership. Zero proven. Zero proof. I'm saying the zero proof both ways. Absolutely. But
We do know Man City have charges. We know that. They have charges, but they Yeah. aren't proven. Half of the No, Indian politicians they are aren't that. proven yet, but they have There's been no smoke cited without for fire, charges. यार भाई. हाँ, There's for no sure. smoke भैया without वो तो fire. मुझे Let's भी see. पता See, है. I'm not वो तो even मुझे I'm भी not पता even है. saying दो I'm तीन not even charges की saying बात they हो are. रही ना, 2-3 charges वो की तो बात है, नहीं हो रही. वो तो गलत है. इसमें it is a clear proven thing. कोई basic YouTube search मारेगा ना, उसे साफ पता चल Exactly. जाएगा कि what Manchester City were doing. अब तो R तो नहीं बचा. Were doing was fishy for sure. Yeah. खुद So no. So my thing is right. My thing is, it's not about oil money for me. For me, if we had, I would have welcomed anybody that has put in bids. It just so happened to be that these are the only two bids left. Yeah. I really, in fact, Jayant asked me once, and I told him, dude, I don't really care as long as the Glazers are out. I just don't care. Exactly. And SJR is keeping them in, so why would I back it? Simple. It's not even That about was the my other take. That side. was my point Dude, as no, well. no. No, I'm Understand, just understand. bantering. No, I know, Suya, but like people in the chat also need to understand like where I'm coming from, right? Because they might not have heard me talk about it. Where I'm coming from is very simple. You can't look at me with a straight face, no, and tell me I should keep 2 of the 6 owners of that club who has sunk our team to this level. You can't honestly tell me I should be okay with that just because you feel uncomfortable with the other owners. That is a little weird. Yalla Habibi. Bhaijan. Bro, what's up Nathan? I How are didn't you? write that, guys. Good. I I'm good, didn't dude. How write are you? How are you? कौन How सूर्यांश are है you, क्या? अंकित भैया? that. अरे अरे कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ भाई ये मैं क्या. तो मैं बस ये बोलने आया हूँ कि 115 वाले चार्जेस की बात हो रही है ना, तो आई विल गिव यू सम चार्जेस माय सेल्फ. ठीक है, अगर आपने पीएसजी को रन होते हुए देखा है ना, एंड कतारी ओनर्स, लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट. ठीक है, शेख मंसूर इज स्टिल अ बेटर पर्सन देन हैविंग नासिर अल खलीफी का चाचा एज योर ओनर भाई. लेट्स बी रियल. ठीक है, एंड Bro, आई डोंट वांट टू टेक डिग्स एट यूनाइटेड फैंस, बट भाई सुनो, it's high time we don't be history अरे भाई merchant. शक्ल तो दिखती है, कहाँ पे है पता ही नहीं चल रहा, बोल कौन रहा है. अरे King बोल Suryansh रहा from है. Madrid Pandits. Madrid Pandits. Suryansh from Madrid. अच्छा अच्छा. ठीक है, and अच्छा. I'll give you one more thing. I'll add up one more thing so that it makes more whole lot of nuisance, ना? कि Nuisance, yes. yep, nuisance. ठीक है, for them, to be fair, for them. Let's be real. History लोग people will not remember history आज से 10 साल बाद अगर सिटी 2 और चैंपियंस लीग जीत जाती है. अगर आप अगले 10 साल में भी वही फटीचा टीम बन के रहोगे जो पिछले 10 साल से हो ना, be real to yourself, you are not doing anything good. History will not give you titles up. History will give you a Champions League spot, but history will not give you titles. Let's be real. Champions League sport? हम हाँ अब मिलने वाला है ना मिलने 2024 वाला, में, हाँ. वो हिस्ट्री के रिलेटेड मिलेगा. We want Super League now. ठीक है, जब वही देखो, मिल रहा I है. don't care. I don't to be fair, I know United through and through because my father is a United fan. But I'll make it out loud, clearly and out loud कि the thing is ना, neither just Jim Ratcliffe will be a good buy, or I'll say even Qatar is better than Jim Ratcliffe. Let's be real, that's my take on it. But saying कि history के हिसाब से we are better, no. जब टेक ओवर हो रहा है आप सब एक ही लेवल पे हो. Let's be real. आपके पास रेवेन्यू वगैरह स्ट्रीम बहुत ज्यादा है. यूनाइटेड इज ऑन रेवेन्यू द बिगेस्ट क्लब ऑन. Yeah, that's the point. ठीक है, Yeah. रेवेन्यू वाइज यू कैन से कि हाँ हमारे पास रेवेन्यू एंड ऑल, बट हु केयर्स अबाउट रेवेन्यू भाई, जब आपको एट द एंड आपके ऊपर भी टेक ओवर ही हो रहा है. आप कौन से भाई अलग वो शेर निकल रहे हो. पीपल विल टॉक अबाउट नहीं चेल्सी है ऐसा किया चेल्सी. भाई अब्रामोविच ने भी एक सिस्टमैटिक वे से अप्रोच जब नहीं हो रही थी तो करना चालू किया, एंड दैट्स व्हेन थिंग्स वेंट बेटर. And that is how Chelsea became Chelsea. अब Chelsea पिछले 20 साल से रेलेवेंट क्लब नहीं है बहुत ज्यादा. हर साल वो एक ट्रॉफी जीतते हैं. देखो, हर मतलब- साल वो ट्रॉफी जीतते हैं. मतलब अगेन मेरा तो यार, आई सॉरी टू कट यार सूर्यांश, लेकिन मेरा तो थोड़ा सा ये भी है कि चेल्सी का नाम है भाई. देखिए डेफिनेटली वी हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, और अब्रामोविच भाई डेफिनेटली हैज बीन अ फादर फॉर द लास्ट 20 years. लेकिन फॉर समवन हु हैज एक्चुअली वॉच्ड चेल्सी बिफोर दैट, I would like to say भैया, that we were definitely a high class. You were relevant at that point. I'm not saying you weren't irrelevant. सूर्यांश एक सेकंड यार, एक सेकंड. अपने अंजुमन भाई को जरा जाना है क्योंकि उनकी अपनी मेरे स्ट्रीम स्ट्रीम है. में 5 मिनट. हाँ तो 5 मिनट मुझे में मुझे भाई भी की जाना stream पड़ेगा भी- भाई, मुझे भी हाँ, जाना पड़ेगा भाई. ठीक है, भैया, thank you ग्रेट टू so सी यू गाइस यार अगेन. जो भी यहाँ पर मजा आया है. भाई, डू नॉट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. हाँ. लेकिन मिलते हैं यार जल्दी से. आई नो और काइंड ऑफ पेंडिंग रह गए बातें, बट सॉरी आई हैव टू कमिटेड. Exactly. और Next मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा आयुष्मान भाई. आपने ना मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं आया था 3 मिनट हुए थे स्ट्रीम को, 50 मिनट बीत गए मुझे पता भी नहीं चला.
वो वाली चीज मजा आया भाई. I had fun. वो तो पक्का है. मतलब it was an amazing stream. Thank you so चलो much भाई. Ankit भैया. Thank you so much भाई. चलो guys, दोस्तों see you, do check out the Suryansh, channels Nathan. Almighty See you guys. Blues and United Road. Thank you guys. चलो भाई. Take care Bye guys. guys. Bye bye Ankit bhai, कैसे चलो see you soon. चलो bye boys. But Suraj bhai, देखो, I'll ask this question directly. Nathan, who are your two signings up when these lot are coming? You have to be very open about it because it's like almost I'm done. very open. Listen, dude, I don't see. I am very open with the whole thing. I made my stance very clear from the beginning. I want Glazers out. I couldn't give a shit who's coming in. That was my stance. fair, Even fair, if fair. anyone has gone far back, I have said that I don't. For me, there is no option. People say it's an option. It's not an option. I don't care what anyone says. Having two of the Glazers back in my club is not an option. And bullshit to anyone else who would say they would take it. Bullshit. I don't believe that. It's all high and mighty because it's not their club. Bullshit. I wouldn't believe that if anyone told me to their face. अरे वो तो we know. चलो, let's leave that topic aside. But signing. No, but what I'm trying to say, want? Suryansh, people make it sound like it's a choice. It's not actually a choice. That's my issue. My issue is people are making it sound like a choice. It's not a choice if you think about the damage done. It's really not. I think in this case, na, even though your biggest rival is Liverpool, na, you both are in the same boat. FSG has fucked Liverpool over बुरी तरह से. ठीक है? That's what it is, yeah. It is what it is, man. I mean, see, the damage is done. Now all you can do is try and reverse it. Can't really. But I'll tell you one thing, na, Nathan. I cannot, like, people are saying ना कि नहीं ऐसा हो जाएगा and all that. वो like कि the person is moving, वहाँ पे पीछे buildings वगैरह बन रही हैं. That Rajnikant वाला thing ना. Yeah. That meme. But I think कि people are not looking at the condition of Malaga and as well as PSG. Qataris ऐसा कुछ नहीं है कि वो they are always a hit. People are saying ना, no, United में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे. It's just hypothetical. You are looking at the positives only. And let's be real, if they are positives, there will be negatives. भाई अभी तो मुझे लगता है United fans are on the fact कि anybody but Glazers. वो तो But see, Suraj bhai, that's how it has happened to us, no, Suraj. Over the years, we have just become fed up. No, I get it. See, my banter was around. You are what you used to make fun of. Like, aren't you what Manchester City were? Tell me. See, I'll just explain. This. Okay? At the end of the day, no. This is genuine. Okay. At the end of the day, even if people want to banter us for in the upcoming future, right, based on the new ownership and possible success based off of it. At the end of the day, we can still say, that we won 3 Champions League and 20 championships without it. Where unfortunately for Manchester City, their success is inextricably linked. Subtle. No. Listen. I am the first person to tell. I don't like City, I don't like Liverpool, and I don't like Leeds. But if I have always said, even on this channel, that Manchester City is well run. I'm not going to lie about that. It's bullshit. Again, it's another bullshit thing that people are going to say. I will only say this. It is inextricably linked to their buyout. Whereas we have actually had success without it. So that's all I'm going to say. People say, like Suryansh saying, you should forget about history. But I mean, tomorrow, if Liverpool gets a wealthy oil club, they still won 5 Champions League without anybody's support that way. I mean, you have to kind of give it to them, I mean, I don't know what will happen in the future, but you have to give what they have earned. So that's what my thing is. Now, forget about City. I have no problem. No problem means as long. See, the thing is, City fans, a lot of City fans don't my only point was directly linked. My issue is they don't want to link the fact that they are an oil club with their success. I don't think so, at least from what I have heard. Nathan, the thing is that which I conquer with you on this topic, that you are like you had success prior to the bunny. Agreed, 100% agreed. But the thing is, like, we cannot out loud say it now. They are as an oil club. That's why I wrote Manchester. I didn't write Manchester United. But like that, no one. See, I think that will pass, Suryansh, because before they used to say that about Chelsea. Now no one says that even about Chelsea anymore. Like towards the end of the Abramovich reign, no one even called them an oil club anymore. It moves out in time, yeah. It just goes. Every third child is a City fan now, because they are realizing that we are successful. People are not.
True. let's be real, history is going to take us till one level. You have to work. Like, I'll tell you one Yeah. thing. Like, let's take the case of AC Milan, the second biggest club on planet Earth. At one time, behind Madrid, it was AC Milan, and let's not even debate on that topic. Yeah. The players who are, they had Ruud Gullit, they had Van Basten and all, everyone. Success is coming, then Kaka, then Maldini and all, everyone. But eventually, what happened is, when they were not working well, they were structurally so fucked up that the history didn't save them. Today, the players will not go to a AC Milan; they'll rather go to a Man City because of the structured condition of that team. So I think, let's talk about, history is not the No, one no. who is Even deciding whether Sadik, the player is even coming or not. Sadik Bhai on my channel has openly said when he went to go watch a I'll game in just Manchester. join you in a minute. He I'll has just join you in a said, minute. yeah. Even no, I'll address the chat. Sadik Bhai has openly said on my channel that when he was at Manchester, I think to see a game, he said I passed by the blue side of Manchester, and he said the blue side of Manchester is very well developed by the owners outside of the pitch. They have cleaned up the streets. Apparently, there were streets there where they used to do, let's just say, not legal things, because it will sound like I'm trying to insult them. Listen, I don't know how England is built to, so I'm not going to pretend like I know. This is what Sadiq Bhai told me, because Sadiq Bhai was sitting in a taxi with an immigrant taxi worker. And the taxi worker told him, look, these owners have done this. All this place used to look like this 10, 12 years ago. So I have no doubt that Man City is well run. And I don't think anyone actually has a doubt that Man City is well run. The thing is, दोस्तों it's easier to run any club when you have the kind of funds they have, because they can get the पैसा premium people in, yeah, whatever, yeah, let's call it resources, right? Because then yeah, everyone will go oil, just leave it. Let's say resources. The gas is resources, the better than people. oil. Huh, and what best thing is, they got people to develop the stadium, develop the infrastructure. It's not even just about money. They got the right people to develop the infrastructure, develop the youth academy, develop the areas surrounding the stadium. It goes a little more than just the football stadium. Even there what they have done. So I have to say that they have run the club well. That's what I would say. This is my opinion. Congratulations, dude. Bellingham in. Zidane number 5 what a भाई उसकी जर्सी नंबर देख के तो भाई एंड सबसे प्यारी बात उसमें पता है क्या लगी ही ऑन हिज इंस्टा अकाउंट थैंक्ड वेलेहो मतलब अभी पहले दिन आया है वो आके भाई उस बंदे को जानता भी नहीं है ही थैंक्ड वेलेहो जस्ट बिकॉज वेलेहो का नंबर था 5 एंड वेलेहो अभी तक गया नहीं एंड ही गिव हिज नंबर ठीक है और एक बार भी कुछ ना नुकुर नहीं किया रिस्पेक्ट टू वेलेहो फॉर दैट इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली साइन है बहुत अच्छा एंड Yeah, फिर of course. बेलिंगम ने पहले दिन आते ही जो रियल मैड्रिड के बारे में बोला है एंड प्लेयर दिखाता है कि भाई उसने डॉर्टमंड तक को थैंक किया उसने बर्मिंघम सिटी तक को थैंक Birmingham किया City, yeah, I saw the video. तो शोज कि भाई वो कितना अच्छा प्लेयर है मतलब क्या अच्छा इंसान भी है ही क्या कहते हैं ही रिमेंबर्स एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी क्लब दैट ही हैज प्लेड एंड अगर आप वो वीडियो भी जाके देखोगे ना क्या कहते हैं जो डॉर्टमंड के लिए उसने बनाई है एंड द होल कैप्शन इज वेरी इमोशनल बहुत अच्छी बातचीत करी है जैन भाई यू हैव टू सी फैबियानो's recent post भाई लिटरली फील लाइक क्राइंग भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया एक मिनट भाई दोस्तों एक तो हम लोग बात करेंगे अभी फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इन द हाउस बिकॉज यस यू हैव गॉट व्हाट यू डिजर्व्ड एंड आफ्टर डेज ऑफ सेइंग कि क्या कहते हैं कब होगा इट्स फाइनली हैपनिंग और अब भाई दोस्तों सबसे पहले तो 2-3 बड़े जोक्स चल रहे हैं पहले जोक एम्बापे ने क्रैक करा है बोला है कि मैंने लेटर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीएसजी छोड़ना चाहता हूं फर्स्ट जोक ठीक है दूसरा जोक पीएसजी कह रही है कि वी वांट टू शो द वर्ल्ड कि एक एम्प्लॉय हमारे लिए सबसे बड़ा नहीं है बाय सेलिंग एम्बापे दिस सीजन वी वांट टू सेट एन एग्जांपल कि हम एक प्लेयर के बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते दैट्स द सेकंड जोक बिकॉज ब्रो लास्ट सीजन तुमने अपने प्रेसिडेंट बुला लिया तुमने सब कुछ कर दिया एंड अब एम्बापे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा आप सबको पता था ये फ्रांस का कैप्टन है एम्बापे एट दिस यंग एज और वो अपने फ्रांस के गेम से पहले क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला था प्रेस कॉन्फ्रेंस इज आउट एंड ही शाउटिंग दैट आई वांट टू स्टे एट पीएसजी बट अब पीएसजी के हाथ में whatever they want to do उसने ये सारी बातें भी कही है कि आई नो क्रिटिसिज्म आ रहा है क्रिटिसाइज करेंगे लोग बिकॉज पीपल डोंट नो द इन्स एंड आउट ऑफ दिस केस क्योंकि सच में लोगों को नहीं पता कि व्हाट हैज हैपेंड बिहाइंड द सीन तो सबको पता है कि रियल मैड्रिड जा रही थी पीएसजी ने रोक लिया एम्बापे ने टी-शर्ट दिखा दी लेकिन पीएसजी ने कैसे रोका एम्बापे ने क्या क्या सुन किया दिस इज
whole another story. और फेब्रिजो रोमानो जो बात कर रहे हैं हमारे क्या कहते हैं अंश भाई in the chat, फेब्रिजो रोमानो ने कर दिया है कि Mbappe has informed PSG of his decision. He will not trigger the option to extend. It means that deal would expire June 2024. PSG position So right no, now. wait, hold on. It's not that, right? January Huh? 2024, we can all put in bids, right? We can start the pre-bid because नहीं, he's वो an free हो overseas जाएगा. player, right? या वो फ्री हो जाएगा 2024 Yeah, में. so that's what in June. So in June, if he doesn't choose to resign in June, we can all start bidding for him, right? Right he's now an we can Before overseas you start. player, no? start bidding, I'll tell you one thing, that he is going to come to Real. Real Madrid. And Listen, the dude. thing is, Listen, I wouldn't do that if I were you, Listening. dude. We have learned Listen, no, I learned am this telling lesson you. already. No, I'll tell you. There are things you should know, and as a fellow Madridista and someone मैं जिसने पहले किसी पहले लोगों के साथ, मदरिस्ता. I have to tell you. Ask Jayant what I told him before Mbappe changed his mind. I told Jayant some interesting news before the change happened. We were live when I was seeing Jayant lose his mind on the stream. I was just enjoying it because I already found out something. I don't know where I found it out. My dad told me, and I just told Jayant, this is what I found out. I don't know. And then go to see it happened only like that. I was like, this भाई is brilliant. लेकिन म्बाप्पे ने बातचीत तो पूरी करी है भाई. People can talk, they can criticize, but people don't have all the ins and outs. और उससे ये भी बात पूछी गई दोस्तों कि अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस है उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट है आपके करियर में. He said none. उसने बोलते हैं भाई नन. अब इसमें आगे भी आएगा, रुको मैं दिखाता हूँ. I only sent a letter. You can't control the reactions, but I don't care about the reactions. ब्रदर ब्रूटल भी हो रहा है अब. I'll give you a brutal very भी हो good रहा है. statement. Nathan, you gave a very good statement to Jayant. I'll give you one myself. There was a rumor which Mario Cortagana reported that Perez wanted Mbappe to write a letter. Well, the letter is out. It is very evident that. See, as far as I knew, he was coming last time. Then I don't know No, what the hell he I'll did. tell you why Just it all turned. failed. Why it all failed. I am the only one who said it. Ki there was no written record of him coming. This time there is a direct evidence, and one of the best reporters in sports journalism is reporting it. Fabrizio has been on this from day one, and let's be real. Last time it was not like this. Fabrizio came in last, and his was just an ultimatum that no, it's the final nail on the coffin that he's not coming. But this time, from the beginning, he has been very sure that they want to sell him. They don't want him here if he doesn't renew. And looking at it and looking the way he's responding to the things, it's clearly and it's damn official that he's not renewing. So And it is a it's very direct that he is planning to move. And I shouldn't be saying it, but he won't go from Qatar to Qatar. I think the only people in this actual race is you guys and this, right? yep, You guys and us, right? and- I think only people can afford him is Yep, you yep, guys yep, and yep. us. But in your I case, think he's like Qatar and Qatar, na? No, bro. I already told Jayant I don't want him. I'll be happy if he comes, but I have But- openly given my status. Chalo, let's leave Mbappe aside. Which player do you want? Like From be PSG? honest and- None. Yeah, no. None of नहीं, them. not from None of PSG. them. I've openly said I'm all in for Rasmus Højlund. Give me But 100 Rasmus million Højlund. for him. Are you 100 million from Holland and not 150 No. million So for apparently he was supposed to be 50, man. Now I don't know. I saw the other day, like yesterday night. The Atlanta they've asked one, नहीं, for- no, देख, na, but- कि अब you have oil money, तो they are like कि नहीं, बहन चोद, हम इनसे तो पैसा नहीं, लेंगे. but still क्या कहते हैं Nathan भाई, my question is, do you think Holland becoming your front number 9 the starter number 9 next season, या फिर do you have मतलब other striker in mind? क्योंकि I don't think you can I look at it this way now. I look at Ten Hag's recent history. I can't go that far back. Obviously, I don't watch the Dutch league, but I really remember very clearly being a Premier League fan how crap Sebastian Haller was. He went there and turned his career around at Ajax. So He much was so in that West he Ham, got a na? yeah. He believe me, dude. Even injured Michael Antonio was more accurate there. Michael Antonio basically missed the whole season. He missed the whole season. Still, he's playing football for West Ham. So that tells you what you need to know. But he went from Ajax. Some will say a downgrade based on the difficulty of the league, obviously not the club. And then he went back up to Dortmund. Some would say other thoughts about Dortmund as well. But he kind of went up again.
because of the improvements he made under Ten Hag. And what I am hoping personally is that he does something similar to Rasmus Højlund, because otherwise we're just going to get robbed. Victor Osimhen is apparently 160 million euros. No, thank you. Harry Kane's 100 million euros with 1 year left on his contract, and he wants to leave. No, thank you. The only other person I want to apparently we might get is Randall Kolo Muani, who's much more interesting prospect. But to be me very personally. honest, keeping in mind अभी जो मार्केट में चल रहा है और जो भी रेट चल रहा है, I think Harry Kane, a proven striker, in and out 30 GA in a team like Tottenham, and the caliber he has, English player, 100 million for Harry Kane is, for me, is a very good deal, भाई. For me, अगर वो Real Madrid में Yeah, आता Jen. for 100 million, मैं कहता कि भाई सही है, because that player Jen. has that quality. Can you trust Let's Kolo play Muani? good- नहीं रुक, लेट्स प्ले गुड कॉप बैड कॉप. ठीक है, आई एम द बैड कॉप, नीथन इज द गुड कॉप, यू आर द वन. ठीक है, तेरे से हम बात कर रहे हैं. आई विल गिव यू द बैड कॉप वाला सिचुएशन. आई एम डेनियल लेवी हियर. मेरे को पता है हैरी केन इज माय सेलेबल एसेट एंड ही इज द एसेंस ऑफ द क्लब. Will I be willing to sell him for a very cheap rate? Like, I don't think 100 million is like the thing they'll go for. They'll straight up ask for 130 million. That 100 million is the quoted price. You cannot be always like कि नहीं भैया इस पे चल जाएगा उस पे चल जाएगा. No, that's not how it works. They will charge a lot. They know it's a Premier League club, and now they have owners who can financially back them at that stage. Even though Glazers could themselves as well, but in this case, they are going to back them. तो बट भाई देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना ये लेट होता जाएगा ना, उतना जितना ये ट्रांसफर, अभी तो ट्रांसफर स्टार्ट ही हुआ है. पहली बार सचिन शेट्टी ने भाई ने बोला था कि कब खत्म होगा, क्या कहते हैं, विंडो क्लोजिंग कब है. देख, प्रीमियर लीग August 1st. नहीं सॉरी, September 1st bro, September 1st. And for Yeah, overseas like, players, so we can't see any of these players that is not named Harry Kane until July 1st. So technically we can only look at Premier League players at the moment anyway. So नहीं, और दूसरी बात ये 14 जून से, अभी 14 जून से प्रीमियर लीग की ट्रांसफर विंडो शुरू हो गई है. 1 जुलाई से ला लीगा, सीरिया है, बाकी सब की शुरू हो जाएगी. overseas. और हाँ, 1 सितंबर वाली जो बातचीत है, 1 सितंबर. देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ट्रांसफर्स पहले ही हो जाते हैं. वो साइन और वगैरह जो तुम्हारे ला लीगा की कमेटी होती है, प्रीमियर लीग की कमेटी होती है, वो साइन और उनको पेपर जब ये ट्रांसफर विंडो शुरू होता है तब. और 1 सितंबर लास्ट है. प्रीमियर लीग का कब है लास्ट? 31 अगस्त है, उससे पहले सेम. हाँ, मतलब कुछ आधे दिन का या एक दिन का फर्क होता है, ऐसा कुछ होता है. लेवा कम अराउंड 40 to 50 एंड केन 100 आई थिंक हाई प्राइस. भाई देख, डिफरेंस, मतलब उसमें डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा. लेवेंडोव्स्की और उसकी खत्म हो गई थी बातचीत, उसकी बातचीत खत्म हो गई थी. ओनरशिप का है. बायर्न की ना इज वेरी मच एडमेंट की द वे दे वांट द क्लब टू बी रन. डैनियल लेवी चूतिया है, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन. ठीक है, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ पुटिंग इट कि बायर्न इज अ वेल रन क्लब और टॉटनहम मतलब एक चूतिया के अंडर है, जो आई थिंक shouldn't be the person in charge. Varna Tottenham would have been a much better team, and that is true because they had that kind of players. Bhai, they had Musa Dembele, who was a very good player, bhai, very good player in his days. So I used to genuinely like him. With Son एक time अच्छा player था, तो हाँ. भाई मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे ये विंडो, अभी ट्रांसफर विंडो शुरू हुआ है, जब ये खत्म होने पे आएगा ना, तो डेनियल लेवी को भी प्राइस घटाना पड़ेगा. बिकॉज अगर वो प्राइस नहीं घटाएगा तो ही इज सेलिंग हिज बेस्ट एसेट एज अ फ्री एजेंट नेक्स्ट समर. तो बस एक साल के लिए वो उसको एंजॉय कर पाएगा, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा. तो एट द एंड डेनियल लेवी, अगर उसके दिमाग में ये है कि उसे बेचना ही एट द एंड, तो उसको 130 मिलियन, बिकॉज इट्स नॉट फीजिबल एट ऑल. भाई सिटी के पास भी पैसा है, लेकिन फिर भी एक टीम अगर उनके पास आती है तो उस हिसाब से पैसा मांगती है. कोई भी ऐसे बड़ा मुंह खोल के नहीं पैसा मांग रहा होता. फॉर एग्जांपल आप किसी को भी ले लो, 100 मिलियन क्या कहते हैं, रियल मैड्रिड के लिए भी रेट सेम था, जूड बेलिंगम के लिए भी 100 मिलियन मांग रहे थे. ठीक है, बिकॉज सिटी भी चूते नहीं, वो बोलेगी भाई तुम रियल मैड्रिड से 100 मिलियन ले रहे हो, हमसे 150 मिलियन लोगे, दोनों के पास सेम ही पैसा है, क्योंकि रियल मैड्रिड ने बचा के रखा है. मैं वो नहीं कह रहा कि ऑयल मनी से रियल मैड्रिड की मनी, We don't compare भाई, we don't compare in terms of money. सिटी में बहुत भाई स्वरूप भाई प्लीज स्पैम ना करे. रियल मैड्रिड शुड Swaroop, I'll answer your question even though I'm not a Real Madrid fan. Because it applies even to my own club, because we were linked to him last year. Jonathan David is too left-footed. One-footed players is not a good idea if you're going to put all your money on him. And he's also coming from the French league. The Spanish league is much more difficult. So. True that. और दोस्तों जितने लोग भी देख रहे हैं, प्लीज लाइक द स्ट्रीम. स्पोर्ट्स नट नेथन को प्लीज सब्सक्राइब करें भाई. स्पोर्ट्स नट नेथन को वक्त से पहले करें, मैड्रिड पंडित्स को वक्त से पहले सब्सक्राइब करें. और अगर आपको जर्सीज खरीदनी है, जैसे मेरे को नई जर्सी मिल चुकी है ऑलरेडी, रियल मैड्रिड की, आउट हाउस फुटबॉल इज द प्लेस. और जल्दी से
5K करवा दो भाई, वक्त से और पहले 5K देखो करा दो। आउट हाउस पे आपके पास 2 कूपन है, ये सोच लो गाइस, TCSB 10 और MP 10, आपको 2 कूपन मिल रहे हैं यार, फॉर गॉड सेक यूज देम भाई। 70 रुपए ना इज अ लॉट अमाउंट, अगर आपको कम मिल रही है। देखो आप 700 में 70 सेव कर रहे हो, सो आपका तो बेनिफिट ही हो रहा है ना। और बहुत उसमें ज्यादा। से थोड़ी अगर आपकी वो भी होगी, चलो ट्रैवल चार्जेस भी लग गए, तो भी आप कम में जर्सी ले पा रहे हो। एंड द क्वालिटी, जैन दिखाओ एक बारी शर्ट इनकी भाई अपनी। आपको पता है सारी की सारी जर्सी मेरी से, बट उससे पहले एक 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 रिक्वेस्ट है भाई, सबसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 3 सब्सक्राइबर दूर है नेथन भाई 800 से, फटाफट करा दो यार अभी के अभी। 3 लोग जाओ कोई भी, और उससे ज्यादा करा दो भाई, मतलब 805 810 करा दो अभी के अभी, वक्त से पहले। और 1K की रोड पे जल्दी से 1K कराओ, और मैं लिंक को क्या कहते हैं नीचे भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अभी पिन भी कर दे रहा हूँ, पिन कमेंट नेथन भाई का चैनल है। वक्त से पहले जाओ दोस्तों, और फटाक से भाई 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 800 करा दो भाई, कम ऑन भाई। द मैन इज पुटिंग, मतलब इतने एफर्ट्स की क्या ही बताऊं। एवरी मैच वॉच अलोंग चल रहा है भाई, एवरी मैच, बीट नेशंस लीग, बीट एनीथिंग, UFC भी आप वहां देख सकते हो, IPL भी कर दिया भाई, और क्या चाहिए भाई। ऑल भाई प्लीज जाके जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, या Ended फिर in उस tears. पे। Ended in tears this season. One way or यस the भाई, other, it ended in tears. First, it और when It's been Mumbai Indians beautiful got knocked support. out, and then second was Mahendra Singh Dhoni in tears, which भाई made me also in tears. भाई रजत भी भाई, तू रियल मैड्रिड को फॉलो वॉलो नहीं करता क्या? Rajat V सिंपली भाई क्या is क्या चुम्मेश्वरी United प्रेजेंटेशन fan. हुए। United एक fan. सेकेंड, आई गिव यू अ न्यूज। वैसे मैंने बोला था कि अंश जूड भाई आ कर रहा हूँ जाएगा, बस। तो मैं हर बार ही बोलूंगा कि आई वाज द वन जिसने बोला था जूड आएगा, तो अपनी भाई ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बट हाँ दैट्स द हमारा थिंग। छपी रोमानो भाई एक हमारा। सेकंड, अंश का कमेंट ले लिया, अंश ने कुछ बोला, कोई हाँ, कमेंट लेने का है उसका, वो तंग लेट्स कर गो रहा है। भाई, थैंक यू वेरी मच, 800 कंप्लीट भाई। फ्रैंको इज 800, लेट्स गो भाई 1K भाई, जल्दी से Yeah. जितने भी ये कर दो यार, 1K इज द नेक्स्ट भाई। Thank you. 123 Thank लोगों you. में Thank you. जितनों ने नहीं करा जाके कर देना भाई प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। पिन कमेंट है, आप अभी चले जाओ, चाहे 127 से वॉचिंग अभी 60 हो जाए, लेकिन आप करके वापस आ जाओ जल्दी से भाई, जितने लोग जाके कर सकते हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट भाई। और मैड्रिड पंडित को करें, रोड टू 9K चल रहा है, और 10K जल्दी भाई, लेट्स गो भाई। अब वापस आते हैं टॉपिक पे। अंश भाई का कमेंट बहुत ही ब्रूटल कमेंट कर रहे हैं अंश भाई, बहुत ही बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं, बहुत ही इनटू है भाई। I feel Mbappe will not come because he will be the face for Olympics, which will take Oh place in God. Paris. And if it doesn't come this season, practically he's out because भाई देख यार, वर्ल्ड कप के लिए No, रुक you जा, always. पेरिस I'll के tell लिए you रुक जा, something. कॉमनवेल्थ You के know, लिए रुक जा। Ansh has a really good point. I'll tell you why. Because Jan 1st, no, Harry Kane essentially becomes free. For you guys, and not for us. We can't bid on him until the season's over. But for you guys and Bayern in particular, he basically becomes free for you guys. Nathan, Jan we 1st. cannot wait till Jan 1 na, we No, don't I'm have a just saying. I'm just like he said, right? If he doesn't come this no, season, then no, no. Kane. I The thing actually is, agree with that. I'll tell you, the mission Haaland and mission Kai Havertz stopped because of this Mbappe wala thing. Perez from Mission day Harry one Kane. knew there was something going on, and you know Perez when he was like in CC and all, na, that tranquilo and all, he was very much confident. Then the second instance is Nacho and Rodrigo coming out and saying it out loud कि नहीं Mbappe आ जाएगा, we are happy. Nacho blatantly said this कि Mbappe is coming, कि Mbappe is a very good player, ये वो, not regarding PSG at all. Which I do think कि people can say कि नहीं, why is he talking about another team's player, but that's how it is. Ab situation is like that the earlier murky situation seems very clear to us right now, and other players are also getting involved. Rodrigo will not come out and say it out loud like I am already ready for him coming, that this he'll play this position, now Benzema is gone, so we will need him and all. So the aspect of him coming is quite high right now. So in Madrid Yeah, fans, even I genuinely think it's either us or you guys. And honestly, as you know, I already said I don't want him personally. He comes. I don't really. I know there will be people who will absolutely lose their mind, but for I've already told Jayan this ages ago, so people will know that I'm not making this up now because he wants to leave next year. I've told Jayan a long time ago I don't want him personally. So भाई I've लुकाकू ले लो। like I said, Lukaku ain't going to score 20 goals 2 years ago. That also came through when he went to Nathan, Chelsea. but I'll say No, my one thing, striker for your team I will hope score. he goes to you guys. I hope he goes to you guys for two reasons. For United, I भाई have a striker in mind. One reason because I want Perez to sort him out. Perez Yeah, that is will, one. डंडा will करते हो, बहुत Perez डंडा will करते हो। Perez will slice him by the knees, no, and then he can do this like that, sitting on the ground like that. He'll be doing it. Slice him भाई when he gets too ब- far. दोस्तों But मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा इस पे, मैं मेरा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट हैगा
कि अंश भाई कह रहे हैं भाई देखो भाई सिंपल सी बात है, वर्ल्ड कप के लिए रुक जा, ओलंपिक्स के लिए रुक जा, कॉमनवेल्थ हो रहा है उसके लिए रुक जा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का Euros. एशेज हो रहा है उसके लिए रुक जा, भोसड़ी के चूती थोड़ी है वो भाई कि हर चीज के लिए भाई रुक जा, भाई पागल है क्या? इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया ले चलूंगा, वर्ल्ड कप फ्री में दिखाऊंगा, पागल थोड़ी है भाई वो। बस हो गया भाई, बहुत जितना होना Isn't था the हो गया, Euros also next खत्म। year? Wait, dude, the हाँ। Euros and the Olympics are both 1 month apart. पता नहीं जो भी हो, अरे सबके लिए Long, खेलेंगे long यार, season. एम्बापे वगैरह थोड़ा ना वो खेलेंगे वर्ल्ड ओलंपिक्स, they'll straight up play यूरोस। इनके पास तो दे हैव टैलेंट पूल, अ रियली गुड टैलेंट पूल ना, फ्रांस हैज अ वेरी good talent pool abhi at this point. But I'll suggest a striker for United that I think Gonzalo Ramos fits the profile really well. That guy should be the But main. he's also 106 million buyout clause. I might But as well he buy Harry has Kane. like, he's 20 na, he's 21, 22. He is young. He's very young. That's true. Plus uska he has that directness which I think your team lacks. When Rashford is not in his hot form, we don't see goals from United. And that's a sorry situation if you are looking at a club which practically has to play for top 4 among 10 teams now. And I'm not even exaggerating when I'm saying 10 teams, because for Chelsea sure. don't have any other competition to play for. They'll directly come into the Premier League to finish in top 4. Spurs would like to finish in top 4 because they would like to maintain that streak. Liverpool, City, of course we know why they are there, and Newcastle, if they get Barella for 50 million, all of the teams are bunch of buffoons if they get भाई Barella मैं for तेरे से 50 वही पूछने million. वाला था। Can Legit you मैं तेरे से वही believe? बोल Can रहा you हूँ। believe when everyone was saying Real Madrid should get Barella, he ends up going to Newcastle? Can you imagine? What, भाई 50 मैं million for God's come sake? on भाई, 50 million. Man, Barella is too good yaar for 50 million. They're spending 40 plus million on McAllister, dude. Liverpool. You spent 80 on Harry Maguire and we got scammed with 120 with Hazard. So like what should we say, bhai? Matlab, we have भाई कोई कह रहा है लुकाकू ले लो, बात खत्म करो, लुकाकू ले लो, बात खत्म करो, सीजन खत्म करो, ठीक है, प्लेयर खत्म करो। भाई वो भाई पहला बंदा देखा है जिसको सऊदी से बिड आई है और वो कह रहा है मुझे और चाहिए, पहला बंदा देखा है, जिसके लिए सऊदी मनी वो नहीं है कि मैं 30 मिलियन है जो 90 No, मिलियन दो। he's out of touch, dude. He's out of touch. Even when Zlatan Ibrahimovic thinks you're a joke, no, that's when you know this guy is out of touch, dude. Zlatan hates him, dude. You know, he hates him. Doesn't have a high opinion of him at all, dude. भाई Like, he can't stand him. भाई रोहित भाई आप पूछ रहे थे कि बार्सिलोना के थोड़े रूल्स क्या कहते हैं रूमर्स बता दो। पहली बात तो बार्सिलोना प्लानिंग अ वेरी बिग क्लियर आउट बिफोर 30th जून। You're selling Kamavinga, right? हाँ You're selling Kamavinga, right? Are you Chudia? We are Bro, not. remember I told you at the beginning of the season, Gem of a game 2 guy. in. Remember I told you Same game guy. 2 in? You remember our discussion? Kamavinga will have a better season than Chouameni. Someone came from your stream to my stream. No? I said, Nathan, you were right. He had a better season. I told you, man. There's something about injury, him when you brother, watch him play, injury. man. When Injury. you watch him play, dude, there's something about him. I'm And telling do you you, remember it's sparky, said dude. Rodrigo is the क्या कहते हैं second best winger in Brazil, and everybody was laughing at me. नहीं काफी है, and Rodrigo at the end proved that first is Vinicius and second. Anthony though is a fucking disgrace, man. What the fuck is he, bhai? And Anthony is a very one-dimensional. He's a very good at one dimension, but he's very one-dimensional. But how Bhai, can Nathan he bhai. be so Very one good. dimension? He only knows one thing, that he can at least pass the fucking ball, bro. Why are you cutting in? But When you don't know you are not Anthony good बड़े at it. मैच में गोल तो मारता ही यार, ये बात तो नहीं। Yeah, that is there, but he's got to improve the weak foot here. He has Bhai, to, but- otherwise he's going to not last very long. Anthony is let's go. You remember that? Babe. मतलब सेंचो का क्या सीन है भैया? सेंचो का सीन पूछ रहे उसको यार। तो मैं भेज एक दो। बार रोहित भाई अभी बार्सिलोना पे आते, एक बार सेंचो का क्या सीन है नितिन भाई? Sell him. For me, Vaibhav, he has one more season. He has one more season. He will be removed. what He is the will be least you removed. expect from him now, Nathan? You have to set up. I don't expect anything from our players, dude. Like I told Jayant a long time ago, like before Ten Hag comes in, I don't expect anything from these players because these players know all they do is disappoint. Until we get a brand new crop of players, to have an expectation is to only be a fool. At the end of the day, a lot of these players are still those players that have failed time and time again. That is the truth. They have had a fantastic season this year. The coach has gotten a lot out of them. I agree, but at the same time, the clear out still needs to be done, dude. We only bought the sad part is we've only bought players in. We have only sold Andres Pereira, and the other players that have left the club have left on a free, which means we have not got any money out of them either.
which means they're not even liable as assets for us. So that is the kind of clear out we're looking at, where we can't even make money off these players that we want to get rid of. So we let them run down their contracts and they go. And they all have to go here before there can be an improvement. It's very simple. There has to be a GA, you said, na? Matlab, there has to be a I would say if we get 80 points, 82 points this season, I think it would be good. We'll go a little higher up. We went 15 points higher up. Sancho, I'm Sancho, thinking of a GA for him. That you want him that many goal contributions at least. I'll be genuine. If he gets 10 and 10, I'll say, you know what, you had a real shit season last season. 10 and 10 is okay. If you get above 10 and 10, brilliant. If he gets 15 and 15, I'll say I'm very surprised. नितिन भाई मैं कहना चाहूंगा कि भाई आपने बात करी कि होजुलैंड आ जाए तो बात बन जाए, कोलुमोनी की बात करी, जोनाथन डेविड की भी लोग बात कर रहे थे. अगर पैसा आ ही रहे तो एक 150 मिलियन ओसीमैन में देने में क्या चाह रहा है, मतलब यूनाइटेड I don't feel comfortable, dude. I'll be honest with you. I don't feel comfortable. I see, this is the because thing. You're in a hoodie. No. It's this now. Like Nitesh, I saw Nitesh. I saw Nitesh like. I said Nitesh on the comments saying they went from hating oil money to justifying it. He obviously missed the discussion I had with Suraj. नितेश मीना को आप कुछ नहीं बोल सकते, वो सुपर चैट करता है हमारे स्ट्रीम पे. No, dude. He comes on my chat even I talk to him. I even congratulated him when they won the treble. There is no issue there. The thing is, no, he's saying he goes from hating to justifying. I'm like, listen, dude. The Man City fans don't want to acknowledge, that their success is directly related to the buyover. They think it's only hard work and strategy, which is not true. It's not true. Because they have had to build all that hard work and strategy through the money they have spent buying those good quality players. And that's it. It comes with money first. Money gets the players in, and then you get all the success that based around the better coaches and better players. They wouldn't able to have won a treble with Elano and fucking Micah Richards in the back, dude. Let's not do that. That's what I'm saying. I don't hate anybody's oil money, because if I hated oil money, I would have been very against Chelsea to begin with. Way before you guys came in, Chelsea was the oil money club. Let's not forget, the original oil club of the PL is in fact Chelsea. And to answer Suraj's question, and I think Suryansh was there, I'll very clearly tell you, in time they will lose that tag of the oil money club, simply because Chelsea also lost the tag of the oil money club. They did. Okay, Jayan, tell me how many people have you heard in recent time, called Chelsea an oil money club in recent time? Let's be honest. They lost the tag. They just, one day everyone just said, yeah, we give up, and they lost the tag. So that's what I'm saying. Eventually the tag will be lost to Man City even, because now they are put in the infrastructure of proper management. Yes, they are going to use money like you won't believe, but they now have the infrastructures to justify all the money they have spent now, 10 years later. So they'll also eventually lose the tag. So it becomes like that. एक एक करके क्या कहते हैं, मैं ले लेता हूँ पहले. रोहित भाई देख, पहले तो एक बार्सिलोना बहुत बड़ा क्लियर आउट कर रही है, शायद अब अंसु फाटी को भी जाते हुए देख सकते हो. उसके बाद बुस्केट्स के वो लोग, I mean, if they're willing to give Araujo, if they're selling Araujo, नहीं, they are looking for some. But he's injury prone, I'll give you that. He's very injured. He'll still be better than Maguire with one leg. It's all good. For sure भाई. बट मैं ये कहना चाहूंगा, देख भाई, उसको बुस्केट्स के रिप्लेसमेंट की बातचीत हो रही है, जुबेमेंडी से बातचीत हो रही थी, अभी तक उसका कुछ निकल के नहीं आया है. वो लोग पलिनिया को देखते हैं फ्रॉम फुलहैम. पलिनिया को देखते हैं कि पलिनिया शायद वो काम कर सकता है, क्योंकि चीपर ऑप्शन होगा, ठीक है. बट उस पर भी इतनी कोई बातचीत नहीं हुई, इतना कोई डील नहीं हुआ है अभी. वो लोग सिर्फ क्लियर आउट के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्टिंग विद मे बी अंशु फाटी, क्योंकि वो अच्छे पैसे कमा रहा है. वो थे एंड टॉक अबाउट जो उन्होंने बोला कि 5 मिनट जितने भी मिडफील्डर्स है रियल मैड्रिड में, उसमें अगर 3 को सेल करना होगा तो किसे सेल करेगा? मैं चूतिया, मैं 3 सेल नहीं करूंगा पहली बार भाई. पहले भाई जिस तरह कल मॉड्रिच खेला, मैं उसे नहीं कर सकता सेल भाई. वो पता नहीं क्या ही बंदा है, ऑनेस्ट गिवन भाई. आप देख रहे हो, वो एक दिन पे उसने रोनाल्डो और मेसी जैसे परफॉर्मेंस दिए अकेले. पहले पेनल्टी जीती, फिर असिस्ट दिया, और फिर गोल मार के सील डन कर दिया. कोमन आके उसके बारे में बात कर रहा है कि भाई सम डेज यू जस्ट कांट डू. आई विल हैव टू से दिस, आई एंजॉयड मॉड्रिच प्लेइंग. और उसके बाद वो छोटा सा लड़का कौन है नेदरलैंड्स का, जावी सिमंस, वो भी करके गया कि भाई मॉड्रिच इज रियली गुड, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो यही है भाई. अभी तो फिलहाल अगर मेरे को बेचना होगा तो आई विल गो विद ऑब्वियसली मॉड्रिच और क्रूज ही होंगे उस दो में, क्योंकि वो अगले साल जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली
आई वांट कि वो इधर ही रिटायर हो जाए, और मेरे को ऐसा लगता है शायद वो अगले साल रिटायर हो भी जाए। मॉड्रिच का तो ऐसा सपना है कि वो सिर्फ न्यू सैंटियागो बर्नाब्यू पे एक बार खेल ले, एंड फिर उसके बाद मॉड्रिच एक बार ही हो जाए प्यारा सा सब कुछ भाई। एंड आई Okay, वांट okay. I need to ask you guys something. I need to ask you, since we are talking Ask. about Ask. retirements. But you all have Ask. to be honest. You all have to be honest, both of you. honest. Did you all feel emotional when you saw Alba, PK, and Busquets retire? I'm a Not bit PK, ill. not Alba, not PK, not I Alba, don't. Busquets. हाँ, Busquets के लिए I felt bad, but Bro, Alba के लिए I was damn shy when I saw Busquets. I was watching the last game. Yeah, I I don't know. was I stunned want when I Messi was news feeling very came. ना, emotional. I was भाई like, Busquets के I'll लिए say, I was streaming at that time जब मेसी का आया था कि Messi is leaving ना, तो I couldn't like, I was trying to recapitulate what I was trying to say ना, but बोला ही नहीं जा रहा था. I was stumped at that level. So I was like, हाँ, okay, and then I was trying to get the mood up of the chat and all, but I couldn't. Which I think is somewhere down the line I saw कि हाँ, the childhood is finally over. They are gone. Exactly, dude. I don't know about you guys, right? But when we're in the heat of things, no, we I feel not take it for granted, but we forget what we are watching. You know, it's like when your elders tell you you should have seen this person play. He was lights out, you know, like that. I saw Carragher retire, I saw Gerrard retire, I saw Lampard retire, JT retire. Like the number of players I've seen retire in the Premier League in the last मतलब 20 years. it's And a now I harsh have to truth. see it's really it can be brutal, man. I saw Beckham retire at PSG. I saw and I don't know, man. I saw PK, of course. PK played for us even, so you know there was a little emotion there. I'm not going to lie. And PK then when I saw I genuinely never liked him. Like, no, भाई I don't like him, but I you know I acknowledge the contribution is how no, I no, would no. put it. For PK, it was Especially he also never. played for us even, so I was you know like you know it is what it is there. I won't get into it. But when I saw Busquets like address the crowd, no, I was like, damn, man. Like I was like shit. And I saw Zlatan, dude. Zlatan in typical Zlatan form, dude. This is your highlight. The away वो होता fans, है no, the भाई home fans, they were playing away. This is the भाई वो तो Y'all कुछ are भी हो blessed to वो तो see कुछ me retire. Y'all भाई are blessed to see me retire in भाई this मैंने stadium. हमेशा ही बोला, This मैंने हमेशा ही guy, बोला bro. कि बुस्केट्स वाज द वन ऑफ द प्लेयर जो कि मैं He's a बार्सिलोना से अगर लाना होता तो मैं पक्का लेगा Barcelona था team. भाई। वो बंदा बिना किसी नखरे के ना किसी चीज के भाई सिंपल फुटबॉल खेलता था। वो ऐसा Yeah, फुटबॉल नहीं था absolutely. जो मैं ये देख के बोलूं कि भाई मैं ग्राउंड पे जाके ये कर सकता हूँ क्या, लेकिन उस सिंपल चीज को जैसा वो करता था वैसा कोई नहीं करके दिखा सकता था भाई। ही वाज सो ग्रेट भाई, नेक्स्ट टू नेक्स्ट अब लेवल Seriously. प्लेयर भाई। एंड Very emotional. वो तो I मेसी the speech also was very nice. भाई And you know the thing is, dude, we don't really you never know how many of that kind of ilk players you're going to see in the future. You just don't know. You know you'll never know if like I thought he was one of the most underrated players in that prime Barcelona because no one ever noticed him. You know he just did the job. He kind of reminds me of the एग्जैक्टली Michael Carrick. You know, he kind of like everyone knows Paul Scholes, but then when Michael Carrick left, bro, there was a hole in our midfield that just couldn't be filled. You can argue it's not been filled in since maybe Casemiro joined it. Like there are people who did a job, obviously. I'm not saying there aren't, but like proper, like just fit the role of doing the job. And this is I'll that tell thing, yeah. you. Like I'm seeing so many, dude. I couldn't believe I'm watching Joaquin play. I watched him play in the Euros, I think 2006, taking penalties, dude. And I just realized when I was watching Real Betis, you were playing Real Betis. I'm like, this guy's still playing football. Like I actually couldn't believe it, dude. He's not even playing football. He's starting. He's starting in football games. I'm He's like, this is officially hanged ridiculous, his dude. boots, na. He's officially Yeah, hanged his that boots. mad, dude. And he's finished right with the most games in the Spanish league. He got that record, Yeah, right? yeah. But the thing is, like, talking about Busquets, na, एक Busquets मिनट का यार सूरज भाई, एक something. एक मिनट दोस्तों, हम लेजेंड्स की बात कर रहे हैं। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के लेजेंड को गाली देना बंद करें प्लीज भाई। भाई दिस एक इज सेकंड बुलशिट, दिस रोहित, इज आई हैव डॉग शिट। जीरो बॉल नॉलेज। बुशरी के तुम लोगों को ये, अगर तुम लोग मॉडरेट वॉडरेट के बारे में ये बोल सकते हो ना, देन क्लियरली आई विल गिव यू वन थिंग ना। आई नो आई हैव मोर बॉल नॉलेज देन यू। आई नेवर सेड पीके वाज अ बैड प्लेयर। आई सेड आई जेन्युइनली डिडंट लाइक हिम। He said he didn't like him. Yeah. भाई रोहित भाई किसी का ओपिनियन है उस पर आप ये नहीं कह सकते किसी के बॉल नॉलेज। भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है बॉल नॉलेज 100% लेके बैठा, कोई भी नहीं है। भाई एज सिंपल एज दैट भाई। हम लोग भी आपकी तरह फैंस है, बट वी आर फैन है नॉट बंच ऑफ इडियट जो आके बस डॉग वॉग वगैरह लिख देंगे और भाई। भाई Listen, dude, it would be very easy for us to just go good riddance. Barcelona's weak now, but
You should celebrate them while they're here, dude. That's how I look भाई at it, at least बाबा personally. भी आए थे स्ट्रीम पे, उन्होंने ये बात बोली थी, इट्स द हार्श ट्रूथ, बट धीरे धीरे द प्लेयर्स दैट वी एंजॉयड, जो हमारे चाइल्डहुड, जैसे मतलब Slowly जैसे going नितिन भाई ने तो और लोगों को देखा, जैसे हम हमारे जो हम जब से देख रहे हैं 10 साल से या 12 साल से, टोनी क्रूज, रोनाल्डो, गैरेथ बेल हो भी गया, तुम समझ रहे हो? नहीं, बट आई मॉड्रिच, से ना मेरे लिए ना बुस्केट्स का बताऊं क्यों था इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना बुस्केट्स में मेरे को ये समझ आ गया कि भाई बुस्केट्स ना वाज नेवर दैट स्पेक्टेकुलर प्लेयर, ही वाज नेवर दैट प्लेयर जिसको तुम लोग बैठ के यू जस्ट लाइमलाइट में वॉच रखते हो। 90 मिनट्स ऑफ बुस्केट्स, यू विल नेवर वॉच बुस्केट्स कंपाइलेशंस, बट बुस्केट्स वाज देयर। ठीक है, व्हेनेवर यू सेड कि बुस्केट्स, अभी भी व्हेनेवर आई से ना कि मिडफील्ड के है तो आई स्ट्रेट अप मेरे दिमाग में आएगा बुस्केट्स। भाई जावी ने ऑफ कोर्स डेल देखी है। बॉस्के ने ये बात कही थी, स्टेटमेंट दी थी, इफ यू वॉच द गेम यू विल नॉट वॉच बुस्केट्स, बट इफ यू वॉच बुस्केट्स यू विल वॉच द होल गेम। ये बात कही थी यार डेल बॉस्के ने डेल अबाउट भाई, बॉस एंड का और दैट्स मेरा कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट वैसी बात है कि आई विल टेल यू भाई, बुस्केट्स के केस में ना, बुस्केट्स इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स ना जो आया, ही कॉन्कर्ड एंड ही वेंट, वो बोला नहीं कुछ वैसा, Yeah, yeah. ही विल बी रिमेम्बर्ड इन द बुक्स बट नॉट एज समवन जिसको बहुत हाई अथॉरिटी दी कभी किसी See, ने। the people, like I said, na, it is one of those things where the people who watch are the people who will tell their children about that player, because सेम गोज फॉर you cannot Matthias as explain well. it any other way. Matthias as well. Matthias was a Ballon d'Or winner. People don't talk about him how good a midfielder he was. But बहुत लोगों के लिए he was idol at that time कि यार ये क्या player है, how is he still there? Matthias might be the best midfielder world has ever seen. वो ऐसे नाम थे उसके. People forget him, and Busquets, people will forget Busquets. That is what I fear कि मैं आज से And 10 साल that's the बाद लोगों best को part. ये That's the बताऊंगा. best thing about what we do, na, Suryansh, is that we get to, if we have children and they like football, we get to remind them. they Like how will like people football, told us about. otherwise they are not our children. You know, They that's what have I'm to. saying, na? Exactly. Like people told us about Duncan Edwards. Like people told us about Sir Bobby Charlton. Even though we have seen him with our own eyes sitting in the stands, but tell him about what he's done. Sir Bobby Moore, captain of the England team, where they've only won one World Cup. Like these are the players. Alfredo Di Stefano, of course, Spain and Argentine, depending on which side you're on. Those people will tell them. These are the things you have to pass down. Otherwise, what is the point of watching it? You don't really enjoy sports if you Same goes don't for Roy Keane as well. watch this. People will never Roy remember Keane, of Roy course. Keane as a good No player. one. They'll just remember that someone who talks a lot. कि वो यूनाइटेड को बहुत बैक करता है and this that. But people don't understand how good Roy Keane was. Yeah. Roy Keane was damn good. Eric Cantona, people don't know how good he was until unless you don't tell them about him. कि वो And the best player- part is they don't even know that we poached them from Leeds when they won the season before the Premier League. People won't even know that is where the hatred even became worse. We took one of their star Nitin players bhai, and won the Nitin league bhai, next year. Nitin bhai, last question to you is views on Kevin De Bruyne bhai right now. Listen, He's man, the best. I think He's the best. I Best midfielder bhai. uh, Kevin De Bruyne is the best midfielder right now, and if he tends to play like this for the next 1 or 2 years, he's going to break all the midfielders record, and he will be known I'll as still say Modric, but No, I'm saying talking about Premier but League. Kevin I'm De not talking Bruyne about- will go walk into anybody's team. हाँ, Let's put it that way. Let's put it very simple. He'll not walk into anyone's team. The person who plays in that position will give him the shirt number. Let's just put it AJ that way. Sports भाई, love you भाई. Look at this भाई, dedication भाई. भाई इस guy is टट्टी लगी है bye. Otherwise love watching you guys keep working hard. Washroom में phone ले जाना allowed नहीं है, potty करके आ रहा हूँ. This is the भाई kind of love we need भाई. Love you AJ Sports भाई. Mad respect भाई भाई. उसका लीड भी खा ही ले फिर जयंत, अगर इतना ही हो रहा है भाई तेरे को वो नहीं भाई, parcel दिस कर इज दे। इट, दिस इज भाई, देखो वो क्या है बता रहा है कि अगर मुझे ले जाना अलाउड होता तो मैं लेके जाता भाई तुम लोगों के लिए, ये वो कह रहा है भाई। तो दोस्तों सबके जिंदगी में डिफिकल्टीज अलग होती है, तो अगर आपको फोन लेके जाने देते वॉशरूम में, आपको उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक्स योर पेरेंट्स ईच एंड एवरी डे। ये क्या वॉशरूम में फोन लेके जाने दे रहे इसलिए भाई, क्या हाँ, बात क्या उसके बहुत ओन जैन, थैंक यू वेरी मच भाई, लव यू आयोटा भाई, लव यू भाई। केडीएम एट बेल्जियम इज नॉट गुड, पेप मर्जेंट शट अप भाई। उसके साथ जब अच्छा खेलना था वो कर रहे थे भाई, मेसी इज द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ टाइम। क्या लड़ रहे हो भाई? हाँ भाई ठीक है भाई।
Messi is the best defender, Messi is the best keeper, ठीक है, Okay, best so manager. Ahmad Yunus is asking you guys, Luka or Iniesta? For Oh, me, this is gonna always be Luka this will be and interesting. Iniesta की जगह I'll have Luka, Xavi. Luka Luka Modric. Modric and Xavi. भाई मेरे सामने कोई भी आ जाए ना, No, but मैंने देखा है. you think Luka Modric is better than Iniesta? Not your preference. Like how he's Yeah, asking I me do about feel De so. Bruyne. I do feel so. I will tell you, I haven't watched 50 games of Iniesta or Xavi. Okay. I have Okay. never even missed, मतलब I have never missed, मेरे को ख्याल से 10 games of क्या कहते हैं Luka Modric. So for me, there will be bias, there will be preference, Oh, fair and I have enough. always seen Luka Modric भाई, always, भाई. Talk about compilation, you talk about World Cup game, मैं क्रोएशिया उसके लिए देखता हूँ भाई. नहीं, Simple but as for that, me, भाई. I'll say Luka, and in case of ना ये Xavi और ये एक clear है Iniesta में people forget कि how good Xavi was. Yeah. Xavi was the reason that midfield was that deadly. People talk about Busquets and all ना भाई Xavi understood the game prior to game starting it. He used to feel he used to feel the grass game से पहले. ठीक है, अभी भी तो करता है वो, समझो he was that good. अभी अब भी तो अब करता तो है. अब तो I अब feel खैर the छोड़ो. grass. भाई वैभव पूछ रहा है जीजू या जावी. भाई जीजू इज द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर एवर एवर पीरियड. क्या कहे? Xavi is the जीजू जीजू का पूछ रहा है, जीजू वर्सेस जावी में. भाई मैं तो इस चीज पे कहूँ, व्हाट डू यू मेक अप अबाउट पीपल सेइंग पेप इज अ चेकबुक मैनेजर. भाई अब तो सबको पता है, दैट्स एन एक्सक्यूज भाई, दैट्स एन एक्सक्यूज. But तो what there is some truth to that though. There is some truth to that. देयर इज सम ट्रुथ की भाई उसने जो वो करे, बट ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पेप गार्डियोला के पास ये पैसे टीम है जिसमें पैसा खर्च कर सकते थे. देयर आर अदर मैनेजर्स हु हैव क्या कहते हैं मैनेज द सेम टीम्स बट हैवंट डन द सेम थिंग्स भाई. I would बार्सिलोना still के put I would still put Mourinho and Sir Alex above him. दैट्स योर प्रेफरेंस, बट ऐसा भाई No, राइट नाउ because they have actually done it without the benefit of a checkbook. नहीं, जब चेल्सी में और मोरिनो आया था तब उसके पास उस No, टाइम he did it at Porto, na Baba. He did it वो at तो ठीक Porto, है, no. बट व्हाट पेप गार्डियोला इज डूइंग राइट नाउ यार. No. I'm not discounting him as a the Exactly. manager. Nobody I'm not discounting him as a manager. I am saying that's why I said there is some truth to it. नहीं, देखो about the मैं ये checkbook बात thing. मैं ये बात, हाँ, देयर इज मैं कह रहा हूँ 10% भाई ठीक होगी वो बात, 10% या 5% वो ठीक होगी, 95% इट्स डाउन टू पेप गार्डियोला भाई. इट्स लिटरली डाउन भाई. मैं भी इतना बड़ा पेप गार्डियोला फैन नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम मोर ऑफ अ एंसिलोटी एंड जोसे मोरिनो प्रो और वो वाली. लेकिन स्टिल भाई यू हैव टू गिव द क्या कहते हैं क्रेडिट टू द गाय हु टोटली एंड थॉरली डिजर्व्स इट भाई. किसने सोचा था पेप गार्डियोला, मतलब किसने सोचा था प्रीमियर लीग में ऐसा द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लोग I would say टूर्नामेंट कहते हैं. I would say this is his most difficult achievement because at Bayern हाँ. it's the German league. Let's not do that. And obviously at Barcelona, I mean, भाई he had treble. Xavi, Iniesta, he had Xavi, Iniesta, Messi, Yeah, David No, but Villa, I'll Carlos say- Puyol, I'll say- Victor Valdez. I'll say for Busquets. me, Pep is the greatest manager I have ever seen. Pep understands football on another scale. Talking about the way he has been working in recent times, he has been creating dynasties in teams. His players who used to have at that time are now producing, and like you can say the CG so are now booming into good flowers, which one can see. So I think he is that guy. क्या बात है, अक्की वाजपेयी. दोस्तों इसी के साथ लेट्स स्टॉप कंपेयरिंग एंड लेट्स स्टार्ट एंजॉयिंग. पहली बात, फुटबॉल आप जब ऐसा फैन देखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट रूल Yeah, एज अ no, फैन इज please. स्टॉप कंपेयरिंग, So- स्टार्ट एंजॉयिंग इट. Exactly. So someone actually asked you guys who's currently having, well, I mean, our transfer window just opened up yesterday, but they asked who's having the best transfer window so far. Someone asked, I forgot who asked. Somebody asked. Who's having the Who do you best guys think? transfer window right now? It's If- only Real Madrid, right? if Like, Bayern get a where's- striker, The only team is having a transfer window right now. It's only As person Real having a Madrid. transfer window. As Real Madrid. I'll say if Bayern get a striker, Bayern is having a very good window. क्योंकि Yes, Conrad and- Leimer they have introduced, Rafael Rafael Guerrero they Guerrero. already have, है ना? Then there is a chance कि Lucas Hernandez को offload कर देंगे, so they can bring a better player than that. So I will go with this guy. क्या बोलते हैं? Bayern, and if they get a striker आना चाहिए, वरना their window is a flop. भाई और दूसरी टीम जिसने साइनिंग करी, जैसे अगर पीएसजी की बात करें, जेम्स
Gen 2 things spiced up. Let's discuss potential Ballon d'Or winner. नहीं भाई, maybe Doobly Hernandez. doobly doop. नहीं करना भाई, वो नहीं करना दोस्तों. It has to be Alvarez, भाई right? दोस्तों नहीं, yeah, it has to be Alvarez और Lautaro Martinez, ठीक है. बट मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं नहीं चाहता इतनी प्यारी स्ट्रीम, इतनी प्यारी बैंटर हुआ स्टार्टिंग में, लड़ाई और सब कुछ हुआ बेहतरीन स्ट्रीम को मैं इस चीज पे नहीं एंड करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी हु जॉइंड द स्ट्रीम एंड प्लीज दोस्तों पिंड कमेंट है, प्लीज जाते ही ये स्ट्रीम खत्म होते ही प्लीज जाके नेतन भाई के चैनल पे कर देना. 850 तक पहुंचाते हैं भाई, 901 के प्लीज भाई करा दो यार जल्दी, वक्त से पहले भाई, वक्त से पहले 1 के करने ही करने भाई, ठीक है. इस महीने में किसी तरह 1 के करने ही है. How नेतन many भाई के और subs do you have right now, Nathan? 803. Little over 800. भाई Madrid पंडित्स वाले भी भाई जाना चालू करो. Give him 1K ASAP. ASAP ठीक है, भाई, no ASAP. question. So you are officially invited to the party when we complete the heist of the Habibi. century. And Heist of the please century. people, please, oh yeah, everybody's getting turned up, dude, after 2023. And before this, I would like to tell you all, if you all will get the link, you all are invited, but you all have to bring your own drinks because we are having an actual party. So ठीक है. please, Dance kindly. और मैंने तो देखा Kindly come with the requirements for the stream. नितिन भाई, मैंने तो ये भी देखा आप तो गर्ल्स की स्ट्रीम पे जाने लगे हो यार. ब्रदर लेट्स गो एस Yeah. Fellow United supporter from Norway. Yeah, I know. Nice. Yeah, बढ़िया. चलो दोस्तों, लव यू ऑल. सुवी हाला Madrid. Subscribe to No Nut Nathan, नहीं भाई, Sports Nut Nathan भाई. Please subscribe to Sports Nut Nathan. And also don't forget to subscribe Madrid Pundits. Bye. सूर्यन जैन प्लीज आंसर स्वरूप का. भाई स्वरूप का आंसर दे दिया था भाई. भाई स्वरूप का आंसर दे दिया. स्वरूप भाई एम्बापे आएगा तो विनी कहां खेलेगा? एम्बापे स्ट्राइकर, विनी लेफ्ट विंग. सिंपल एज दैट ब्रदर. एम्बापे स्ट्राइकर, विनी लेफ्ट विंग. Or we are going to put. Switch करते No, रहो, I switch think करते रहो. Vinicius should try his chance at left back, dude. I Right think back. it'll be damn good. Suvi, Left love back. you. The Suvi, team Suvi. will be it will be Courtois in striker position, Mbappe Yep. goalkeeper, हाला Madrid joy bro to birth. Kamavinga left mid, left back, center back, everywhere. So love you bro. हाला Madrid. Jayant answer did. Messi wins treble and Haaland wins World Cup. Whom would they give Ballon d'Or? Brother, ए भाई तू माफ कर भाई. Shut the f up भाई. Bye.